ओके सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी जहत के बारे में है जहाँ पर हम दो अपेरेंटली वेरी डिफरेंट एंड डेस्परेट किस्म के जो टॉपिक्स हैं उनका एक मर्जर होता हुआ देखते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर। तो इसके लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर जावेद साहब को। डॉक्टर जावेद जो है ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सक्खर में। और इनके साथ मेरा एक जाती जो रिश्ता बनता है वो एलुमनाई का है, क्योंकि ये भी कायद आज़म यूनिवर्सिटी से एमएससी और एमफिल इन्होंने किया है, और मैंने भी कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एमएससी और एमफिल किया है। और हमारा टाइम भी तकरीबन करीब करीब है। जिस साल ये एमएससी कर गए थे उससे अगले साल मैंने एमएससी में दाखिला लिया था वहाँ। तो ये एक बड़ा हमारा एक एलुमनाई का रिश्ता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने एमएस किया है मैथमेटिकल फाइनेंस के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क से, और पीएचडी मैथमेटिक्स में ही है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क से। इनका मेजर जो है वो मैथमेटिकल फाइनेंस, स्टोकेस्टिक, जियोमेट्रिक, पीडीईज ऑन मैनिफोल्ड्स वगैरह है। और इनकी रिसर्च जो है वो बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर है, और उन्हीं में से एक डाइवर्स टॉपिक जो है वो रिलेशन बिटवीन फाइनेंस एंड फिजिक्स है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो ओवर टू यू सर, यू कैन शेयर द स्लाइड्स एंड यू कैन स्टार्ट। Sure. So seemingly जैसे अली भाई ने भी शुरू में ही कहा कि भाई apparently ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हमें पता है कि physics is all about it's like it's a way to deal with the cosmos from microscopic to macroscopic scale. It has to do with things that we can, जो हमारी sensory perception में आती हैं, that we can touch, we can feel, we can really see the material, the matter actually. And the finance is all about how money works actually. So how seemingly these two things can have इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक हो सकता है। तो विल सी दैट कि क्या ताल्लुक जो है वो हो सकता है, बहुत गहरा ताल्लुक है। यहाँ जब हम बात कर रहे होते हैं दैट कि फिजिक्स इज बीइंग अप्लाइड इनटू द फाइनेंस, तो इसका हमारा मतलब ये नहीं होता कि फाइनेंशियल जो प्रोसेसेस हैं या जो फाइनेंशियल क्वांटिटीज हैं वो कोई न्यूटन सेकंड लॉ सेटिस्फाई कर रही हैं, या कोई लैग्रांजियन एंड कोई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि हम फिजिक्स को अप्लाई कर रहे हैं इनटू द फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, हमारा मतलब ये है कि हम फिजिक्स को एज अ वे ऑफ थिंकिंग हम उसे परसीव कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, एंड देन उस वे ऑफ थिंकिंग को, उसके मेथड्स को, उसके टूल्स को हम के टर्म्स में फाइनेंशियल चीजों को मॉडल करके और फिर उनको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। So when the physics is being applied into the finance, हमारा मतलब essentially ये होता है कि हम फिजिक्स को as a way of thinking, as a tool, as a way of investigation apply कर रहे होते हैं फाइनेंस में। Okay. 70s के बाद there was entire new branch of physics and you can say economics that has appeared. Actually, it's called the econophysics actually, which is you can call it physical economics and finance actually, where you take the tools from quantum mechanics and computing, statistical mechanics, the Riemannian geometry, and then you apply it into the really finance actually. Okay, so econophysics is an entire area of investigations जहाँ चीजें बिल्ड हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, और लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं और फिर उसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अप्लाई भी कर रहे हैं। Okay. As I said, and I said earlier actually, that मेरी wish है, especially I say this to the math graduate actually, that in this day and time it is not enough to just learn math actually. You need to have a diverse set of skills, and I would say that, और मैं यही चीज जो है फिजिक्स के ग्रेजुएट्स को भी जरूर कहूंगा, especially youngsters को, कि आप अगर आप if you want to do good physics and say applications of physics, आपको math सीखना है, you have to learn more and more maths actually. You have to obviously learn physics, but you have to also learn computing actually. That's an important aspect, ठीक है, जो कि हमारी education में missing. I don't know about I certainly know about maths actually, that कि mathematics में मुख्तलिफ जगहों पर जो पढ़ाया जाता है, this
component of computing is missing actually. So I don't know about physics, maybe physics में पढ़ाया जाता हो computing, but computing is necessary. And when I'm saying computing does not mean that कि आपको बस कोई लाइब्रेरी चलाने आ गई पाइथन की, या आपको मैथमेटिका में कोई इंटीग्रल सॉल्व करना आ गया. And that's not computing is like it's a way of thinking actually, that कि अगर आपके पास एक physical problem है and you have a model for it actually, और उस model को आप कोड करना चाहते हैं, you should be able to write a pseudo code for it actually. आपको आप में इतनी वो सलाहियत होनी चाहिए कि you should be able to write a pseudo code for it. You need to write an algorithm. आप algorithm एक लिख सकें और इस physical problem को implement कर सकें एक computer पर, एक super computer पर, एक quantum computer पर, whatever you call it actually. And then data science and AI. And then a direction that can give you. And then econophysics, I would say that econophysics is interesting because in econophysics, I mean, if you get it along with your favorite things, whatever that you do, ठीक है, अगर आप econophysics थोड़ी बहुत सीखते हैं, ठीक है, I mean, it could be a good source of income to you actually. I mean, you can take financial industrial problems, use your physical skills, आप अपने physical skills को इस्तेमाल करते हुए you can solve those problems, and you can get you can get good projects, you can get good fundings from this area actually. तो मेरे ख्याल से ये सीखा भी जा सकता है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है. मैथ और जो मुसीबत है फिजिक्स की और मैथ की, वो आप झेल चुके हैं. अब थोड़ी सी आप फाइनेंस और इकोनॉमिक्स अगर आप सीख लेते हैं, तो you can get into this area actually. So it's a fascinating area actually. Anyway, so that's what is my suggestion. अच्छे फिजिक्स ग्रेजुएट को मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटिंग, कुछ AI स्टफ, और फिर some specific application जरूर आनी चाहिए, like econophysics or anything else that you want to do. Econophysics is one. So is it something that I'm just making this up actually? No, I mean it's इस पर इतना ज्यादा लिटरेचर मौजूद है और इतनी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है इस एरिया में, that you can find standard textbooks actually on dealing with such matters actually. Okay, so economy, physics, you can find that कैसे आप statistical mechanics के tools को इस्तेमाल कर सकते हैं financial markets में, कैसे आप random processes को इस्तेमाल कर सकते हैं finance में, and so on and so forth. Even you can find a good deal of books actually that tells you that how कैसे आप quantum mechanics के जो tools हैं, यानी quantum mechanics को as a method actually. I mean, for me, the quantum mechanics is not just a science and subject. मेरे लिए quantum mechanics is a method of investigation. It's a framework कि जिसमें आप जिसके through, जिन goggles के through आप चीजों को देख सकते हैं. And the people have been looking at it actually from pretty long actually. Okay, so the people are working, so you can get into this stuff, you can learn this stuff actually. Okay, so is physics and finance connection new? I mean, certainly not. हमारे uncle Newton थे, so the Newton was able to successfully model the motion of heavenly bodies. He was very able, he was successful in modeling celestial mechanics. But उसने जो है वो पैसे लगाए कुछ stock market में, and it turns out that उसके वो सारे पैसे जो हैं, और a good chunk of money of Newton वो डूब जाता है. And he famously says that I can predict the planets and the motion of the planets, but not the markets actually. It's really, the markets are crazy actually, so he couldn't. And then you have another good example that I can give you is Gauss actually. The Gauss was the first guy कि जिसने we all know that what Gauss has done in the sense of physics and physics, but he has also good contribution into the finance actually. He was the first guy जिन्होंने जो है pension mathematics develop किया, and in fact he wanted that के के बाद widows हैं professors की, तो उनको अगर मुझे पेंशन देनी है या हमारे इंस्टीट्यूशन को उन्हें पेंशन देनी है, तो वो पेंशन किन प्रिंसिपल्स के तहत देनी चाहिए. Okay, so this is what that he developed actually. This Gauss developed. And here is something interesting actually. So our very own Professor Asghar Kader, I mean, some of you people might know, and some of you people might not know that Asghar Kader was the first guy
जिन्होंने जो है ये एनालॉजीज काइंड ऑफ ऑब्जर्व की बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट एंड द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एंड देन ही रोट अ फर्स्ट पेपर ऑन क्वांटम इकोनॉमिक्स एक्चुअली, ठीक है. सो ही वाज द फर्स्ट गाय हु रोट दिस पेपर ऑन क्वांटम इकोनॉमिक्स, एंड 70s में उन्होंने पेपर लिखा था, और उसके बाद फिर काफी अरसा जो है वो, और वो पाकिस्तान के एक जर्नल में जो उन्होंने पब्लिश किया था. I mean, it was not some novel place actually. So later on when people did same kind of realization कि यार हम तो quantum mechanics को apply कर सकते हैं to understand economical and financial systems actually, तो फिर उन्होंने when they investigated actually that क्या कोई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये already सोच रखा हो. It turns out that they found Azhar Kader actually an interesting paper on quantum economics, and so he was the first guy that who wrote um, that wrote a paper on quantum economics actually. So our own Professor Azhar Kader. Okay, so now let's get into the little bit of finance. अब जब हम बात कर रहे होते हैं फाइनेंस की, तो एज एन इन्वेस्टर फर्ज कर दें आपके पास कुछ पैसे हैं और आप लगाना चाहते हैं, और फिर and you want to think as an investor actually, आप पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन से ऑब्वियस तरीके हैं और सवालात जो हैं वो जो कि आप पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप किस तरह पैसे बनाएंगे. ऑब्वियसली हम जो पैसे बनाएंगे, वी आर गोइंग टू we want to make some investment in such a way that हम जो है वो चीप चीजें बाय करें और फिर उनको एक्सपेंसिव या थोड़ी सी ओवर प्राइस करके या प्राइस बढ़ाकर अगर हम सेल करते हैं, तो डिफरेंस इज गोइंग टू बी अवर what you call profit actually. So some very simple rule actually. Okay, the way to make money, buy cheap, sell expensive. Okay. इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अगर आप पैसे लगाते हैं तो आप पैसे जो है वो दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या दो किस्म की एसेंशियली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. बाज इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो रिस्की होती हैं, जिनमें जब आप पैसा लगाते हैं तो उनकी प्राइसेस, चीज़ों की प्राइसेस क्यों के ऊपर नीचे जाती हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन सेवरल प्रिंसिपल्स लाइक रियल एस्टेट. हमें पता है रियल एस्टेट की प्राइसेस कभी जो है वो एक जैसी नहीं रहती. गोल्ड है, स्टॉक्स है, ठीक है. दे आर रिस्की एसेट्स एक्चुअली. ये ऐसे एसेट्स है कि जिनमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप पैसे लगाते हैं, तो यू एक्सपोज योरसेल्फ टू रिस्क. यू कैन मेक गुड मनी, यू कैन लूज मनी एक्चुअली. बट व्हेन यू टेक रिस्क, जब आप रिस्क लेते हैं, तो ऑब्वियसली you get better profits actually. Okay, but the other kind of assets is basically the risk-free asset. Risk-free assets is a myth actually. Nothing could be absolutely risk-free, but usually जब हम पैसे बैंक में रख रहे होते हैं, या सर्टेन इंटरेस्ट रेट पर या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें ये होता है दैट ओके, ये पैसे हमारे प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, इन पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इन पर हमें जो है प्रॉफिट मिलता रहेगा. बट वो प्रॉफिट जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू जब आप रियल एस्टेट में या गोल्ड में या स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. तो एसेंशियली दो ही तरह की इन्वेस्टमेंट्स हम कर सकते हैं, रिस्की एसेट्स एंड रिस्क फ्री एसेट्स एक्चुअली. ओके, तो समझदार और सियाने लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई कभी भी अपने अंडे किसी एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए. यानी कभी भी सारे पैसे जो है वो ना आप रिस्की एसेट्स में लगाएं, ना रिस्क फ्री एसेट्स में लगाएं. यू शुड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली. कुछ पैसा जो है वो अपना आप रिस्की एसेट्स में लगाएं, कुछ जो है पैसा अपना रिस्क फ्री एसेट्स में आप लगाएं. ओके, एज ए इन्वेस्टर मैं एक और चीज में इंटरेस्टेड हूँगा, वो ये है कि मैं ये चाहूंगा कि मैं I want to minimize my risk and maximize returns actually. ठीक है. अच्छा, ये जब भी लफ्ज रिटर्न्स का इस्तेमाल होगा quite often, जब भी, तो इसका मतलब होगा कि मैं प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो यूजुअली हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि हम ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करें कि जो जिसमें रिस्क कम से कम हो और रिटर्न्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो. ओके, सो दिस इज व्हाट इज वन ऑफ द थिंग दैट वी वांट. मगर इस सब करने के लिए, ठीक है, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, अगर आप एक फिजिसिस्ट हैं, आप एक मैथमेटिशियन हैं, आप किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे? आप इंटरेस्टेड होंगे कि ये जो रिस्की एसेट्स हैं, स्पेशली गोल्ड है, स्टॉक्स हैं, ठीक है, कैन वी अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड से मुराद है कि क्या हम इन के डायनामिक्स को, इनके उतार चढ़ाव को क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या हम कोई मॉडल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर
और risky assets actually. अगर वो मॉडल हो तो वो किस किस्म का मॉडल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए. This is what that is, a scientific mind would think about it actually. ठीक है. और दूसरा ये कि you would also be interested in knowing that के markets कैसे काम करती हैं. अगर आपके पास एक market है जिसमें मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, आप अपना पैसा जो है वो रिस्की एसेट्स में लगा सकते हैं, रिस्क फ्री एसेट्स में लगा सकते हैं, गोल्ड में, स्टॉक में, रियल एस्टेट में, डिफरेंट जगह पर लगा सकते हैं. ठीक है. और डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं. यू जस्ट सी दैट कि जी बाज लोग बाय कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है. तो द क्वेश्चन इज, कैन वी अंडरस्टैंड that how does the market works actually. क्या हम समझ सकते हैं कि मार्केट्स कैसे काम करती हैं. Okay. Then obviously जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम पैसा लगा रहे होते हैं, तो एक और चीज जो कि इम्पोर्टेंट है दैट कि हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए. ठीक है. आपने गाड़ी खरीदी है, आपने you have made some investment, अच्छा फ्लैट खरीदा है, गोल्ड खरीदा है, तो आपको पैसा डूबने का खर्चा होता है. ठीक है. And one way to deal with this situation is to basically what do you call, buy some insurances. Okay, so the insurances जो हैं वो आपको help out कर रहे होते हैं that कि अगर if you get into the difficult situation, ठीक है, कि जहां पर आप चीजें लूज कर रहे हैं, आपने गाड़ी खरीदी है, like it gets damaged actually, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट है वो लूज होने वाली है, तो फिर the insurance can help you actually. But the insurance that helps you is not coming out for free actually. It's not, you're not getting that insurance for free. You need to pay for it. आपको पैसा पे करना पड़ेगा, आपको premiums पे करने पड़ेंगे. So the question is that how can we get these, हम किस तरह से ये जो magical premiums हैं, for example जो insurance companies हमसे charge कर रही होती हैं, ठीक है, how do we get these numbers actually. So we are interested in that actually. ठीक है. और हम इसमें भी interested होते हैं that के कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे जैसे बाबे बुढ़े हैं, तो भाई आपने अगर थोड़े बहुत पैसे बनाए हैं, तो आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं दैट कि मैं अपने पैसे को प्रोटेक्ट कैसे करूं. ठीक है. या अगर आप जवान हैं और आप रिस्क टेकर हैं, तो आप ये भी चाह रहे होते हैं दैट I must put money and then I should take some risk and make more money out of it actually. So how could you do that? So all of these questions are the questions that, for example, this area of econophysics, quantitative finance, mathematical finance, जैसे आप जो भी कहें, so this really does actually. एक और काम जो हम कर रहे होते हैं, for example, we just saw, और हमें समझदार लोग, जैसे मैंने कहा कि आप अपने पोर्टफोलियो का, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, किसी एक पर्टिकुलर एसेट में आप सिर्फ इन्वेस्ट ना करें, आप डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें. सो ऑब्वियसली जब आप, फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ एसेट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब हर एसेट के एसोसिएटेड, ठीक है, यू हैव रिटर्न्स. आपको एक पता है दैट कि यार गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा, साल में मुझे 10%, 5%, 6% रिटर्न मिलेंगे. ठीक है. मगर इसमें रिस्क कितना है. ठीक है. सो यू कैन हैव to each asset there are two basic numbers that are associated and important, that are that कि जी इसके साथ associated risk कितना है और returns क्या है. Okay, so it's like risk and returns. Now फर्क कर लें, आपके पास 10 assets हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. Okay, और उन 10 assets के लिए आपके पास एक रिस्क मेजर भी आपको पता है दैट कि इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क कितना है और रिटर्न्स आपको कितने मिलेंगे. और फर्ज कर लें आपके पास $10,000 हैं. How would you make a decision? आप कैसे ये डिसीजन लेंगे दैट कि हमें कितना परसेंटेज जो है वो किस स्टॉक में पे इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है. ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हम सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें. ठीक है. या ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट करें, और उसके बाद कितना इन्वेस्ट करें. ओके. सो हाउ कैन यू क्रिएट दिस पोर्टफोलियो. ओके. हाउ कैन यू गेट दीज वेट्स एक्चुअली, दैट मुझे कितना परसेंटेज अपने पैसे का किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, किस एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए. All these are the questions that that an inquisitive mind, a curious mind would be interested in actually. Okay. Now I mean I can go on and on, and let me start with what do you call some analogies actually. Okay. So ये सारे questions को हम कैसे answer कर सकते हैं, take it through, for example, physics. Let's begin with some analogies actually. So here is the first and the key analogy.
ठीक है. So we know that we had Uncle Robert, okay, Robert Brown. So he had this observation in 18th century that के यार अगर आप एक vessel लें जिसमें पानी हो, ठीक है, और इसमें अगर आप कोई pollen particle hang करते हैं या introduce करते हैं, तो ये pollen particle जो है it will move down actually. मगर ये नीचे आते हुए this pollen particle is not going to come down. I know that it's going to come down because the gravity is pulling it, but like it just jiggles and then it kind of comes down actually. Okay, so in other words, this particle kind of randomly changes its position in time. Okay, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसकी अगर मैं इसकी positions को plot करता हूं, ठीक है, on some, for example, time versus position plot actually, then I'll see that के जो particle की positions हैं वो कुछ इस तरह से kind of fluctuate कर दें. Okay, and this was completely understood or fully understood by especially in 1900, यानी जो 1905 एयर आइंस्टाइन का. So उसके जो 5 famous paper हैं उनमें से एक paper जो है was on this description of Brownian motion. Okay, so Uncle Einstein basically told us that I can have a complete description of the motion of a particle that is, say for example, that is moving say in a random manner actually, और उसको describe मैं कर सकता हूँ with something called a Wiener process actually. Okay, the Wiener process. So Wiener process has a mean zero. In other words, इसका मतलब ये है that के for example अगर pollen particle जो है वो यहाँ से start होता है move करना, ठीक है, you introduce it into the water and like this is the average path that it would take actually. Okay, yani this a particle would like to stay what do you call around this path. Okay, but it is not going to exactly follow this path, so it is not like a free fall particle actually, so it will jiggle. Okay, because इसके साथ जो पानी के दूसरे molecules मौजूद हैं, they are hitting back and forth, and because of that it is kind of a jiggling, but its jiggle is going to be around zero actually, in other words its original position. Okay, और जैसे जैसे time बढ़ेगा, it can go a little bit away from its mean actually, but it is a process जो कि रहना चाहता है around its mean, so it don't want to go. So ये जो particle है, its motion is in such a way that ये अपनी mean से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता. Now here is something. So you have this particle actually. Now the key insight that people that realized is that कि अगर मैं एक stock की price को देखता हूँ या एक gold की price को देखता हूँ, ठीक है, on time versus price axis actually, वो भी बिल्कुल इसी तरह, उसकी prices भी बिल्कुल इसी तरह jiggle करती हैं. कभी आपने stock market के ग्राफ देखे हो that कि ये फलां currency है, ये फलां stock है, S&P 500, Dow Jones and KC 100 index, ठीक है, ये जी मारी गैस के जो stocks हैं ये ऊपर नीचे जा रहे हैं. You just see that के इनकी prices जो हैं बिल्कुल इसी तरह fluctuate कर दी होती हैं. ठीक है. Now here is the key thing. Why the physicist gets interested in, for example, such kind of idea. Here's a key thing. यानी इसको describe करने के लिए, like इस situation को, ठीक है, you have a very rich physics actually. You have rich physics. Okay, so you can take, say, the theory of random processes, you can take the theory of quantum mechanics and describe it. तो अब क्योंकि स्टॉक की प्राइस भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है कि जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है. ओके, फ्री पार्टिकल मूव कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है. ठीक है, तो हम वही टूल्स, एग्जैक्टली वही टूल्स स्टॉक्स के मोशन को समझने के लिए और मॉडल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द आंसर इज बिग यस एक्चुअली. सो दैट्स व्हाट इज एसेंशियली हैपनिंग, दैट के जो आपके लिए एक पार्टिकल है which is moving in a random environment in a random manner, वो मेरे लिए या एक फाइनेंस के बंदे के लिए एक स्टॉक है
कि जिसकी प्राइस बिल्कुल उसी तरह फ्लक्चुएट कर रही है कि जिस तरह यू नो एक स्टॉक एक पार्टिकल की यू नो पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव कर रहा होता है। यू गेटिंग द पॉइंट? सो आप अपना पूरा फिजिक्स स्टार्टक्स हैं, ठीक है, जो डिस्क्राइब कर रहा है पार्टिकल के मोशन को, और उसी की मदद से यू कैन डिस्क्राइब द what do you call the motion of the particle actually. And here is the second key analogy actually. Okay, say imagine now you have more than one particle actually. First that this is a vessel, and you know these are like the these black dots are like the the particles, which is like moving here and there, okay, colliding with each other and so on and so forth, okay. Or iski, for describing this, such system of particles, and jahan ye particles ek dusre se interact kar rahe hain due to variety of reasons, you have this entire theory, something called statistical mechanics actually, okay. The question is कि अगर मैं assume करूं कि ये जो particles हैं, each one of the dot actually, okay, it's like a stock or the stock price, okay. Then this this physical system is something that can mimic a financial market actually. Okay. It can mimic the financial market. Yeah, financial market में भी stock prices बिल्कुल इसी तरह से randomly move कर रही होती हैं due to what do you call financial reasons actually. लोग buy कर रहे होते हैं, sell कर रहे होते हैं, ठीक है. The demand and supply का principle जो है वो action में होता है कि जिसकी वजह से जो stocks हैं, जो different commodities हैं, उनकी prices fluctuate कर रही हो. तो क्या हम इस फाइनेंशियल मार्केट को भी समझ सकते हैं यूजिंग द टेकिंग इट एज द एनालॉगस टू द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली, जहां पर पार्टिकल्स आर काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन randomly and interacting with each other? The answer is yes actually. I mean, आप जो है you can take your tools from statistical mechanics and apply them, and this is what the people have been doing it actually. Okay. So I hope you could see that the particle motion is analogous to stock price, okay, and a system of particle is analogous to financial market actually. So financial market of stocks, okay, yeah, financial market of traders making different decisions. We will see some examples actually. अब इसको करने के लिए जो फिजिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिसाइसली वही फिजिक्स कैन एक्सप्लेन दिस स्टफ एक्चुअली as well. So you see, आपको for a physics people, the physicists, आपको कोई इन्वेंट को व्हील को री इन्वेंट नहीं करना, ठीक है. आपको ऑलरेडी अपनी आपको क्वांटम मैकेनिक्स आता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आता है, आपको रीमानियन ज्योमेट्री आती है. What you can do is that with the same knowledge, you can understand the financial systems actually. Okay. And I'll show you some examples, some concrete examples actually. Okay. All right. So let me quickly talk about something called forward and futures. अगर बीच में सवाल हो, अगर आप कुछ discuss करना चाहते हैं, please, I mean, you can stop me actually. So I hope that I'm not going too fast, or maybe I'm not आपका आपको बोर नहीं कर रहा. So you can always ask. ठीक है. अगर जी अली जान का कुछ सवाल है, हैंड रेज किया. जी अली जान. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर, ये जैसे आपने अभी कहा कि पार्टिकल हमारा जैसे ही नीचे जाता है उसको अदर पार्टिकल्स अफेक्ट करते हैं, तो वो रैंडमली आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे जाता है. जिस तरह स्टॉक्स फर्क करते हैं, तो स्टॉक की मूवमेंट जो है उस पे उसी तरह जो है वो मतलब मूवमेंट करती है. तो मैं जो अदर पार्टिकल्स जो हमारे पर्टिकुलर पार्टिकल को अफेक्ट कर रही हैं, तो उन्हें क्या हम फंडामेंटल एनालिसिस कह सकते हैं? जैसे कि न्यूज हो गई, न्यूज अफेक्ट करती है स्टॉक्स को. we will see that कि हम जो फिजिकल पार्टिकल सिस्टम है उसकी हर एक चीज को, या उसकी जो उससे एसोसिएटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको फाइनेंशियल सेंस में इंटरप्रेट कर सकते हैं. Obviously the news is also, ठीक है. We will see later on that कि
news is like the temperature in you know in a system of particle interaction actually. ठीक है, वो temperature का role play कर रहा है. We'll see that. Anyway, so quickly मैं बात करना चाहता हूँ forward और futures की. ठीक है, so ये दो स्पेशल किस्म के contracts हैं जिनकी मदद से you know जिनको लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं you know to hedge the risk actually. So what is the forward contract? So it's a very simple contract. फर्ज कर लें आप एक सेलर हैं, so this is a seller और ये एक बंदा है which is like a you know B. ठीक है, ये बायर है. ठीक है, फर्ज कर लें ये कोई क्रॉप है जो हार्वेस्ट करता है. फर्ज कर लें ये एक शख्स है जो कि फॉर एग्जांपल you know गोल्ड बेचता है, so it's like a goldsmith है. ठीक है, you know so it's like it's a goldsmith actually. ठीक है, और आप इसके पास आज टाइम 0 पर जाते हैं और आप इससे कहते हैं कि मुझे टाइम T फ्यूचर में 6 महीने बाद 8 महीने बाद, ठीक है, मुझे गोल्ड चाहिए. ठीक है, 1 तोला गोल्ड चाहिए, मगर 1 तोला गोल्ड की जो प्राइस है वो आप आज तय कर लें. ओके, से फॉर एग्जांपल वो प्राइस जो है लेट्स से आजकल कितना चल रही है 360 370 समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जांपल आप 400K जो है यू नो तय कर देते हैं. ठीक है, अब बी जाता है ए के पास, वो ये कहता है कि मुझे 1 तोला गोल्ड चाहिए होगा टाइम T पर. ओके, और ये प्राइस है जो कि हम तय कर देते हैं. एंड लेट्स से दैट के यू नो ये प्राइस जो है वो दोनों के लिए सूटेबल है और ये दोनों एक अग्रीमेंट साइन कर देते हैं कि जी ठीक है. अग्रीमेंट किस वक्त साइन हो रहा है? टाइम 0 पर साइन हो रहा है. ठीक है, किस वक्त के लिए? टाइम T के लिए. क्या अग्रीमेंट है कि 1 तोला जो है वो गोल्ड डिलीवर करेगा ए बी को एट टाइम कैपिटल T, किस प्राइस पर? 400K पर. 400K जो है वो कहाँ हमने तय की है? टाइम 0 पर तय की है. ठीक है, तो हम अग्रीमेंट कर लेते हैं और ये अग्रीमेंट जो है ये बाइंडिंग अग्रीमेंट है. ओके, सो दिस अग्रीमेंट इज काइंड ऑफ अ बाइंडिंग अग्रीमेंट. ओके, बाइंडिंग इन अ सेंस दैट कि अब मुझे पता है कि इफ दिस इज T एक्सिस और ये यू नो दिस इज प्राइस एक्सिस एक्चुअली. ठीक है, और आपने एक प्राइस तय कर दी के अब मुझे पता है कि जो स्टॉक की प्राइस है, सॉरी जो गोल्ड की प्राइस है वो तो रैंडम है. ठीक है, वो ऊपर नीचे होती रहती है. ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है. तो यू नो एट टाइम T व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी? एट टाइम T कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट के जो गोल्ड की प्राइस है वो बिलो अग्रीड प्राइस हो, जो कि आपने प्राइस अग्री की है 400K उससे कम हो. ठीक है, यानी फर्ज कर दें टाइम T पर इसकी प्राइस जो है वो 350K है. ठीक है, तो इस केस में क्योंकि ये एक बाइंडिंग अग्रीमेंट है तो बी आएगा ए के पास, उसे पे करेगा क्या जी 350K और उससे एक जो गोल्ड का तोला है वो लेगा. इस केस में यू कुड सी इमीडिएटली दैट कि ये जो सेलर है सॉरी ये जो सेलर है ये लूज करेगा 50K. क्यों लूज करेगा? बिकॉज जो मार्केट वैल्यू है इस स्टॉक की एट टाइम इस गोल्ड के 1 तोले की एट टाइम T वो 400K है. ओके, जबकि इस अग्रीमेंट की वजह से, जिसे मैं फॉरवर्ड अग्रीमेंट कह रहा हूं, ठीक है, उसे इसी कॉन्ट्रैक्ट को यानी इसी 1 तोला गोल्ड को बेचना पड़ रहा है with at the price 350K actually. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई ये स्टॉक इस तरह से इवॉल्व करे कि एट टाइम T इसकी प्राइस जो है वो जो आपकी अग्रीड प्राइस है कि उससे ज्यादा हो. ठीक है, फर्ज कर दें दैट के टाइम T पर इसकी जो प्राइस है वो 430K हो जाती है. ठीक है, तो अब इस केस में जो बायर है वो लूज करेगा, यू गोना लूज द मनी. ठीक है, एंड सेलर इज गोइंग टू मेक द मनी. ठीक है, बायर क्यों लूज करेगा? इसलिए बिकॉज जो चीज उसे मार्केट से 400K की मिल सकती थी, सॉरी जो चीज उसे मार्केट से 400K की मिल सकती थी वो उसे 430 नहीं. ओके, जो यू नो सेलर वुड लूज. व्हाई? बिकॉज जिस यू नो इस गोल्ड के 1 तोले की जो वैल्यू है वो 430K है, मगर इस अग्रीमेंट की वजह से, फॉरवर्ड अग्रीमेंट की वजह से उसे इस जो 1 तोला गोल्ड है उसे बेचना पड़ रहा है यू नो एट 430K एक्चुअली. ओके,
So it's in that case, this guy is going to lose. So in other words, you can see that the forward contract is a contract, ठीक है, कि दोनों ही जो हैं ये बैट कर रहे हैं, एक तरह से जुआ खेल रहे हैं गोल्ड की प्राइस के ऊपर, ठीक है, और ये समझ रहा है दैट कि गोल्ड की प्राइस जो है वो इससे नीचे रहेगी, के से नीचे रहेगी, सेलर जो है it thinks that कि वो इससे ऊपर जाएगी, and so on and so forth, okay, but like in one of the party is going to lose actually, ठीक है। तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अग्री है किसी एसेट को बाय या सेल करने की फॉर अ सेट प्राइस एट लेटर टाइम, ठीक है। अच्छा, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इसका कुछ अप फ्रंट नहीं होता, ठीक है, और बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के लिए एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अब बिल्कुल इसी का एनालॉग जो है वो एक और एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, वो ये कि जी फर्ज कर लें ये हमारा भाई है गोल्डस्मिथ और ये बायर है, ठीक है, और ये जो गोल्डस्मिथ है ये कहता है इस बायर को कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, और वो ऑप्शन ये है कि भाई हम दोनों मिलके ये तय कर लेते हैं कि जो गोल्ड की प्राइस 1 तोले की जिस पर हम करेंगे ट्रांजैक्शन या ट्रेड, उसकी प्राइस जो है वो के होगी, लेट्स से दैट ये 400 के रुपीस है, ठीक है। और मगर ये जो बायर है ये ऑप्शन दे रहा है, सॉरी ये सेलर है, ये ऑप्शन दे रहा है एक बायर को, और उसे ये कहता है कि अच्छा एक काम करो, वो ये कि हमें पता है कि ये जो गोल्ड की प्राइस है, ठीक है, ये रैंडमली मूव करेगी। अगर ये प्राइस 400 के से कम है, ठीक है, एट टाइम कैपिटल टी, तो तुम जाके मार्केट से खरीद लेना इसी को, ठीक है। तो मेरे लिए, मैं तुम्हें बाउंड नहीं कर रहा तुम्हें कि तुम नेसेसरली मुझसे 1 तोला गोल्ड का खरीदना एट टाइम कैपिटल टी, ठीक है। अगर जो स्टॉक की प्राइस है, ठीक है, या गोल्ड की प्राइस है एट टाइम टी, वो इस के से कम हो तो जाके मार्केट से खरीद लेना, और अगर इसकी प्राइस एट टाइम टी के से ऊपर चली जाती है तो मैं इस चीज का जिम्मेदार हूं कि मैं तुम्हें इस प्राइस के बजाय इस प्राइस के पर मैं तुम्हें सेल करूंगा 1 तोला गोल्ड का, ठीक है। सो फॉर दिस like this thing is like an option for A actually, that कि अब आपके पास A के पास राइट है कि वो टाइम T पर जो गोल्ड का 1 तोला है वो या स्टॉक या जो भी रैंडम एसेट जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं बाय करें एट अग्रीड प्राइस एक्चुअली, ठीक है। अगर प्राइस कम होगी अग्रीड प्राइस से तो ये जाके मार्केट से खरीद लेगा, अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, और अगर जो प्राइस है स्टॉक की या गोल्ड की वो अग्रीड प्राइस से टाइम टी पर ज्यादा हो जाती है, तो फिर क्योंकि बी जो सेलर है ये एक ऑप्शन इसे दे रहा है, ठीक है, तो वो ये जो ए है ये अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, और ये कहेगा कि भाई मुझे इस प्राइस के पर अपना गोल्ड का जो 1 तोला है वो दो, ठीक है, बिकॉज यू हैव डन दिस एग्रीमेंट विद मी। अब इस केस में यू कैन इमीडिएटली सी दैट कि ये जो सेलर है ये अपने आप को एक्सपोज कर रहा है टू द रिस्क एक्चुअली, ठीक है, एक्सपोजिंग टू द रिस्क। नाउ ये ऐसा क्यों करेगा, ठीक है, व्हाई दिस सेलर इज गोइंग टू गिव द ऑप्शन टू द बायर एक्चुअली, ओके, इज नॉट गोइंग टू डू इट फॉर फ्री। ये क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि इन अ सेंस दैट कि ये ए है ये एक किस्म की इंश्योरेंस अपने लिए बाय कर रहा है, तो इस इंश्योरेंस के अगेंस्ट टाइम जीरो पर, ठीक है, दिस बायर इज गोइंग टू गिव सम प्रीमियम एक्चुअली, ओके, इट इज गोइंग टू गिव सम प्रीमियम और what do you call some price actually of this option at time zero actually, ठीक है। So this agreement is not going to be for free. For example, forward contract में कोई upfront money नहीं था, मगर option contract में upfront money होगा। सवाल ये है कि इस option की price क्या होनी चाहिए, ठीक है, what should be the value of this option actually at time zero, कितना प्रीमियम पे करे जो बायर है सेलर, ठीक है। Now it turns out
this was one of the open problem for, you know, around 70 years actually. Or 70s में जाके there were two people, Black and Scholes, they solved this problem. And they solved this problem in an interesting way. They proved that कि ये जो option है इसकी price satisfy करती है एक partial differential equation actually. ठीक है? And you can immediately see that कि ये जो partial differential equation है, this partial differential equation is a linear partial differential equation. In fact, it's a Cauchy-Euler type partial differential equation actually. I mean, if you really see that कि derivatives के साथ उसी order का polynomial जो है वो एक multiplied है. So it's a Cauchy-Euler type equation actually. And it turns out, so here is something, so here is the physics actually. It turns out कि ये जो interesting looking equation है, अगर आप इस equation पर कुछ suitable transformations apply करें, ठीक है? So you take some, apply some suitable transformation actually, ठीक है? यानी ऐसा समझ लें, you change this equation physically but not chemically. So you know this equation is the same equation, but you change it, you know, a little bit. इसका जो है makeup जो है वो उतार दें. So when you remove the makeup out of this Black-Scholes equation, it turns out that this equation is basically heat equation actually. Now, isn't that fascinating actually? Just think about it. That the heat equation is something जो कि you know describe कर रही होती है that कि अगर आप एक physical material ले लें, ठीक है, और उस physical material को आप for example expose करते हैं with some heat source, तो फिर how the heat flux is going to change over the time, okay? You know how now the same equation that is explaining a physical phenomena is giving you the price of the option actually, the price of the insurance, the value of the insurance, the premium of an option, ठीक है, जो के you know risk को hedge करने के लिए इस्तेमाल होता है. So isn't that interesting? And here the interesting thing. So 70s में they wrote this paper actually, and they got a Nobel Prize for it actually. ठीक है, so they get a Nobel Prize. जैसे आप कहते हैं ना कि you know 1905 was the year in physics कि जिसके बाद फिर you know physics तब्दील हो गई. ठीक है, it was no more the classical physics actually, it becomes the modern physics, at least the you know the standard narrative. बिल्कुल इसी तरीके से you know इस पेपर के बाद, so this after this revelation actually, this in 1973 में you know Fisher, Black और Myron Scholes ने ये पेपर लिखा. इसके बाद financial world तब्दील हो गई. And this was kind of an invitation actually. Think about it. कि ये पेपर अगर एक you know physics का बंदा पढ़ रहा होता है, ये कहता है यार you know ये कैसे हो सकता है that कि एक equation जो कि you know temperature distribution को describe कर रही है, heat flux को describe कर रही है, it can have you know all kind of physical meanings, is also describing a financial process actually, or the evolution of say the you know the prices of it's an evolution of the prices of what do you call premiums actually, prices of options, okay? So you know something interesting, and it was an invitation. और इसके बाद you know धड़ाधड़ लोग physics से you know और you know engineering से और mathematics से भरमार जो है वो finance में लोग आने लगे, and they dominated it. और फिर जो इंटरेस्टिंग चीज हो रही होती है दैट कि भाई जब नए लोग आ रहे होते हैं एक एरिया में, तो फिर वो साथ अपना कल्चर भी ला रहे हो, ठीक है. Now you could see that these days this modern finance has almost become physics. It has almost become engineering or mathematics actually. Okay, you know you can find theorems and you can find theories and you can find you know all kind of interesting things happening. Basically, are described in the terms of really rigorous mathematics and physics actually. Okay, so let me give you some examples from quantum mechanics actually. Okay. Okay, so here is the first thing. Let me okay, so I'm assuming that you know people know a little bit of quantum mechanics, ठीक है. हमें पता है that कि quantum mechanics को formulate किया जा सकता है in various ways. You can formulate the quantum mechanics. Sir, I have a question. Sure, please. सर क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द क्लिक लाइक ब्लैक होल शोन को किस तरीके से ख्याल आया कि हीट इक्वेशन जो है इस फिनोमेना को जो है
डिस्क्राइब अब कर सकती है, जैसे आइंस्टाइन को ये ख्याल आया था या इसको पढ़ने के लिए आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा. I don't have a time. I mean, it's a it's a 1 hour lecture actually to describe actually that कि ये इक्वेशन कहाँ से आया. ठीक है, बट ये नतीजा, it's a corollary of assumptions. ये इक्वेशन बरामद हो रही है, ड्राइव हो रही है. ठीक है, दैट की प्राइस जो है ऑप्शन की, उसे वो जरूर जो है इस हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए. ठीक है, सो इट्स I mean, you need to read paper. It's like a pretty much standard. बहुत आराम से आप इसकी derivation देख सकते हैं कि कहाँ से ये आ रहा है. But they got a Nobel Prize for it. It's a very novel idea actually. It's a very novel idea. ठीक है, उसके पीछे भी बड़े मजे की कहानी है. Okay. Anyway, so let me so I was talking about quantum mechanics. So quantum mechanics को formulate किया जा सकता है in a variety of ways. You can formulate in terms of what you call matrices. You can formulate in terms of, or using, for example, this Schrödinger equation, and you can formulate, the Feynman told actually that there is an equivalent way of doing quantum mechanics, as that is that you can describe it in the terms of the path integrals actually. Okay, so I hope that physics people know a little bit of path integrals. Ali bhai, hota hai usually path integrals, undergrad for example जो physics कर रहे हैं उनकी training में? I'm just curious to ask actually. नहीं, मेरा ख्याल ये हाँ ग्रेजुएट स्कूल में होता है. Okay, so they do it at the graduate level actually. So let me just give you an intuition actually, at least a mathematical one. I'm not a physicist. And I would say outside actually that I'm not a physicist actually. I mean, मेरी descriptions में बात ऐसी चीजें भी हो सकती हैं which जो कि शायद ठीक ना हो, but I'm trying my best to जो मैं देख सका हूँ वो मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा. Okay, so let me give you a very intuitive picture of a path integral actually. Okay, so here is a space, for example. Okay, for example, you are in time versus space coordinate system, and let's say that you have a particle at this location actually. Okay, in other words, that at time I don't know, maybe sometime t. Okay, this was the initial location of the particle actually. Let's say xi. Okay. And let's say that इस नुक्ते को मैं A से denote करता हूँ. And let's say that after some time, this particle, appears somewhere here. Okay, somewhere here. So this is what. Now, I am interested in, the physicists are, for example, interested in knowing that what are the probabilities of transitioning of the particle from this location to the, what do you call this location actually? Okay, so like one of the interesting questions that you can ask is that what is the probability that the particle that was initially here is going to appear here? Okay, at say initially at time 0 it will it was here, and at time some capital T the particle appeared here actually. Now, what are the transition probabilities actually? And we all know that कि जब हम transition probabilities compute कर रहे होते हैं तो we compute these transition probabilities from what do you call we use this fancy word, quantum amplitudes, or the probability amplitudes actually. Okay, so you compute this quantum amplitude, which is like a complex number, and its magnitude gives you what do you call this probability. Now the key insight is this, that the particle can take, so how many paths are there from the location A to the location B? In fact, there are infinite number of paths. I hope that you agree with me, that joins location A to location B. In other words, the particle can take any one of the paths to go from the, what do you call A to B actually. Okay. Now, so here is another key thing, that the sum of the paths are more probable. इनमें से कुछ paths जो हैं वो ज़्यादा probable हैं than other paths. In other words, that the particle is going to follow some paths with a more probability than the other actually. Okay. Now, what is the path integral? The path integral is, if I'm interested in computing these transition probabilities, I need to compute what do you call this quantum amplitude or probability amplitude. And this probability amplitude can be computed as the sum
of the probability amplitude corresponding to each path actually. Okay, in other words, आप हर path लें, हर path के corresponding compute करें probability amplitude. Okay, and then आप इन तमाम probability amplitude को sum करें, and then this is going to give you the net probability amplitude of a particle, you know, in moving from A to B. And then uske square ko, you know, and its a square gives you the probability, the transition probability of, you know, going from location xi to xf actually. Okay? Now, this sum of the amplitude, okay, so the Feynman came up with this idea, can be computed as an integral actually. Okay, and that integral, okay, you know, so it is something interesting actually. You know, math or physics वालों का एक different culture. Physics वालों को अगर आप देखेंगे तो whenever they want to write the integrals actually, वो पहले differential लिखते हैं और उसके बाद फिर integrand लिखते हैं. Okay, while you know the mathematicians do other way around. You know, पहले integrate and then differential actually. So I can calculate this what do you call sum of amplitudes, okay, by taking, for example, a particular path, okay, and considering a differential of it. And that differential is this calligraphic dx of t. Keep in view that this differential is not the Riemannian differential or the classical differential that we have, though you can describe it in the terms of Riemannian, you know, what do you call differentials, but ये वो differential नहीं है जो आप usually differential जैसे Riemannian integral में encounter कर रहे होते हैं. ठीक है? It's an infinite dimensional, you know, differential actually, because there are infinite paths actually. Okay, so in other words, ये जो differential operator है, it is defined on an infinite dimensional Hilbert space, the Hilbert space of the paths, the space of the paths actually. And in fact, I was looking actually that does this you know, differential has a, you know, rigorous meaning, measure theoretic meaning actually. Just for example, ये जो differentials हैं, Riemannian differentials, you can give them a measure theoretic meaning actually. यानी इनको हम rigorously define कर सकते हैं in the terms of measure theory. It turns out that like this doesn't have a rigorous meaning actually. Anyway, so you take a path and you take a piece of it, and this path is arbitrary. You have to keep in view इनमें से हर एक path को represent कर रहा है. And for this path, you compute the amplitude. Okay, the amplitude, and this amplitude is basically the exponential, which is iota over h cut times s of x of t actually. Okay, so you can interpret this this exponential to be the contribution, okay, that is coming out by a particular path into this net amplitude actually, जो कि आपको probabilities देगा later on. ठीक है? So this is like an amplitude. So that's a complex number. Okay, that's it's not probability, but इसका magnitude can give you the probability actually. Okay, so what do? That you take all possible paths, and for each, you know, all of the paths, you compute these amplitudes, and then you sum them up between what do you call these two locations, A and B. Okay, so this is what really is the intuitive idea of what do you call the path integral. I mean, obviously, this is like computing it is a more messier actually. By the way, this S of xt is basically the action functional actually. I mean, you know, those who have done some, you know, classical mechanics know the action function. In other words, you take the Lagrangian of the particle, okay, and you integrate this Lagrangian over, you know, say between time 0 to capital T actually, I mean, if you are interested in time 0 to capital T, okay. So what is roughly a path integral? So path integral is the sum of amplitudes, okay. That is the sum of amplitudes coming out of the each path. हर path के corresponding एक amplitude है, okay, probability amplitude है, and you sum them up, and this gives you what you call the net amplitude. But you compute this net amplitude through what do you call this path integral actually.
and then its magnitude gives you the transition probabilities. ठीक है? So here is an example essentially that कि अगर आपके पास एक free particle है, so you have a particle which is moving randomly but under the influence of no force, जिसका mass m है, start होता है position xi से at time 0, it ending location is xf at time t, then its amplitude is this path integral, okay? And we know that the Lagrangian for the free particle is this guy, and if you integrate this Lagrangian you get sx of t, and then you solve this integral, okay, and this solution of integral gives you this amplitude, actually probability amplitude. And if you really see, अगर आप इस भाई साहब को देखें थोड़ा सा गौर करके, this is nothing but it's a density function. So it's a density function of it's a density function of normal distribution. That's what it is essentially. Okay, a density function of normal distribution. Okay, so in other words, using what do you call path integrals, मैं compute कर सकता हूँ amplitude, और वो amplitude मुझे फिर transition probabilities बताएगा of transitioning a particle from a location to another location, actually. The probability of transition from one location to another location. Now, here is the key thing. So if you want to apply this into the finance, just replace your particle and its position by asset price, okay, and replace the mass with this quantity, the one over sigma square. Don't worry about it, okay? And Lagrangian is basically the cost of on the returns, actually, okay? And the path integral is यहाँ क्या होता है, the sum over the all paths. So यहाँ पर भी you have the sum over the all paths, but the sum of the all paths what? यानी यहाँ भी हम ये कह रहे हैं that कि आपके पास दो locations हैं A और B, okay? And you have a stock price actually, and you are interested in computing the probability that how this stock, or what is the probability that this stock price will move from location A to location B actually. Or tool kya hoga? The same tool is going to be the path integral actually, because a stock price is like a free particle actually. Okay, so it's like there's an analogy between both actually. Okay. And then using path integral, you can even compute the price of the option. So one way is that you can Black-Scholes PDE solve kar dein. The other way is that you can compute the same price of the option, the cost of the option, okay, but using the path integral. कि जहां यहाँ s of xt, वहां s of xt was action functional, यहाँ भी actional functional है, but it's a financial action that has some financial meaning. And phi of x is the payoff of the derivative, ठीक है? वो आपको bet क्या देगा, वो profit आपको क्या देगा, जो आपका financial contract है. And d of xt is like the measure over the price path, like it was measuring the, in case of the free particle actually, okay? And it turns out that using I'm not getting into the details of all this, but it turns out you can drive the precisely same formula, जो कि आपको Black-Scholes PDE को solve करने से मिलेगा, ठीक है? जो कि आपको heat equation को solve करने से मिलेगा, you get the precisely same formula for the price of say call option or option, ठीक है? But from the path integral point of view actually, from the path integral point of view. And here is the thing, once you have path integrals in finance, so this is like an invitation to quantum field theory into the finance actually. Okay, so it's like quantum field theory is not only, it's like doing a lot of amazing things in, physics actually. It's probably the most reliable theory that you have so far, okay? That describes the nature, at least at the microscopic level, okay? The same theory is describing the financial
what do you call motions actually, are the motions of a stock, are the prices of options actually. Are you getting my point? The same thing, the risk management is being done through path entitlement. So that's one example. The other example is that you can also do this PDE track actually. So we know that quantum mechanics mein, ek aur formulation jo hai quantum mechanics ki is that you can treat or do the quantity in the quantum mechanics in the terms of observables and operators actually. Okay. So if you take, for example, these two operator, positions and momentum operator, we know that it satisfies this canonical relation that ye commute nahi karte ek dusre ke saath. You can also interpret it in the terms of uncertainty Heisenberg, uncertainty Heisenberg principle and so on and so forth. Corresponding to that, बिल्कुल इसी के analog, आप define कर सकते हैं price operator, which is like same as the position. So the position of the particle is the same as the price of the stock actually. So you can define the price, what do you call operator. And corresponding to the, what do you call momentum operator, you can define a momentum operator, which is like a price generator. And if you assume that it satisfies the same, what do you call canonical relation, that ye dono operators jo hain ye commute nahi karte, you can't measure the position and the price at the same time, the uncertain Heisenberg principle. Okay, so you have an analogous in the same analogous in finance as well actually. Okay, so अब वहां जैसे आप ये कहते हैं that कि आपके पास एक wave function है और वो wave function describe करता है क्या जी what do you call evolution of the what do you call the probabilities of obviously the wave function is not probability, it's complex number, but its magnitude gives you the probability. उनका magnitude आपको probability देते हैं, but essentially हमें पता है that this wave function corresponding to what do you call motion of particle, okay, satisfies an evolution equation, which is the Black-Scholes, not the Black-Scholes equation, but you can call it quantum Black-Scholes equation. I mean, if you wish, it satisfies the Schrödinger equation. So यहाँ भी आप ये कह सकते हैं that corresponding to free particle, which is like my stock, okay, a risky asset actually. Okay, you have a wave function, and that wave function satisfies what do you call it satisfies the Schrödinger equation actually. Okay, which is like a Newton's second law in Newtonian mechanics. Okay, where here the Hamiltonian operator, okay, and the Hamiltonian is a bit different actually. Okay, so that's what people are doing. I mean, they are taking this quantum mechanics stuff and applying it as to the finance actually. और ये सब चीजें corollary हैं सिर्फ एक चीज की, कि आपने ये assume कर लिया कि जिस तरह particle move करता है randomly, एक free particle move करता है, free particle is same as the what do you call is same as the stock price actually. Okay, तो वही सारा physics जो आप free particles के लिए कर सकते हैं, you can do the precisely take the same physics and you do it for finance actually. And but the only thing that you need to do is that analysis के बाद आपको अपने जो physics के tools से आने वाले results हैं उनको financial terms में interpret करना. That's what you need to do. But that's really, you see the direct relevance actually. ठीक है, दूसरा formalism जो है quantum mechanics का, it also has something to do with the finance actually. I'll get to this example. I mean, if there is going to be time, I mean, it's this is an example related with the quantum computing actually. That I mean, how the quantum computing is related. But I want to get to the quickly statistical mechanics. और Ali bhai, मुझे please जरूर बताइएगा when you think that I'm taking too much time, या जो है you think that this is enough, ठीक है? So please let me know actually that when you think that you are done. So here is statistical mechanics actually and finance actually. और इसके पीछे क्या idea है? इसके पीछे भी वही idea है. देखें, statistical mechanics is all about I'm not making a claim because I'm not a physicist, but as far as I have understood is that instead of one free particle, now let's say that you have
a collection of particles actually, okay, and they are moving randomly, okay, due to whatever reasons, okay, and they are interacting with each other, okay. So this interaction would force a particular particle to move in a what do you call random manner. Not only the particular particle, but almost every particle is going to move in this financial system, in this what do you call physical system, okay, a complex system actually, ठीक है. अब बिल्कुल वही that अच्छा, now let's replace each of the particle, or treat each of the particle as a stock actually, ठीक है, replace it with the risky assets. तो फिर मुझे पता है that then this complex system would represent a financial market actually, okay. So then this is your stock market actually, where what do you call, the prices of the stocks are going up and down actually, okay, due to the buying and sellings, due to the behavior of the traders, due उन decisions की वजह से जो कि traders कर रहे हैं about the stocks actually. तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही particles are the prices of the stocks are going to go here and there actually, going to go up and down. The question is, जैसे मैं इस system को study कर सकता हूँ through statistical mechanics, क्या मैं financial markets को भी study कर सकता हूँ through statistical mechanics? The answer is yes actually, and I want to give you a concrete example. Okay, so here's a crash course in statistical mechanics, at least the key things that जिसकी मदद से मैं बात करना चाहूँगा. So have entropy. Entropy has a variety of meaning. इसकी बहुत सारी meanings हैं. In physical sense, doesn't have a fixed value, but usually, for a complex system, entropy का मतलब जो है, usually you treat it as the degree of disorder or randomness in a system actually. Okay, or you can more precisely interpret is as that how much the microscopic states are consistent with are in coherence with the macroscopic states actually. And what do you mean by macroscopic and macroscopic state? That कि भाई अगर आपके पास ये ढेर सारे bunch of particle हैं, इनमें से हर particle की एक position होगी, okay, एक एक position होगी, एक velocity होगी, ठीक है, और उन positions और velocities और उनके motions का consequence है, what do you call the macro states actually. और फिर this system is going to have a total energy actually, ठीक है. और फिर I mean, if you expose this complex system, ठीक है, where the particles are moving from here to there, to temperature, it starts to behave in a different manner actually. और फिर हम study करना चाहते हैं उनकी properties को. So that's what you do. So what does second law of thermodynamics tells you? That कि भाई अगर आपके पास एक isolated system है, ठीक है, something कि जिस पर कोई दूसरा influence नहीं है, ठीक है, the entropy tend to increase, or the disorder tend to increase or stay actually, ठीक है. A quick analogy could be that कि अगर for example आप एक box लें and then you from a corner you say for example release some gas molecules. The gas molecules would like to spread actually, okay, they would like to spread over throughout this, and they want to take, और ये फिर अपनी एक natural configuration में आना चाहते हैं, ठीक है. By the way, एक लफ्ज इस्तेमाल होगा configuration का. So configuration could be, you can interpret, आप interpret कर सकते हैं configuration को as a snapshot actually. I know that कि ये particles they are continuously moving here and there, ठीक है. अगर किसी instant पर if you take a snapshot of it, ठीक है, then I know that इनमें से हर particle is going to be frozen in what do you call time, and that snapshot is going to be, वो जो snapshot है वो एक configuration को kind of represent कर रही होगी, ठीक है. Do not trust on anything that I say in physics. अगर ये समझ नहीं आती बात तो अली भाई से दोबारा पूछिएगा, ठीक है. But this is what that I understand actually. Okay. So एक छोटा सा problem मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, from statistical mechanics, and I want to show that you see that precisely same problem is solving financial problem, okay. So entropy maximization. So you have this principle that the entropy want to, what do you call, maximize in a given system actually. First कर लें
आपके पास एक सिस्टम है, सो यू हैव अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जिसकी यू नो इट हैज सम फिक्स एनर्जी, और इसकी एक एवरेज एनर्जी है, ठीक है, यू नो, एंड इट हैज सम माइक्रो स्टेट्स, यू नो, पोजीशंस हैं पार्टिकल्स की, वेलोसिटीज हैं, यू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन द बिगिनिंग। आप इसमें इंटरेस्टेड हैं दैट के यू नो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि ज्यादा प्रोबेबल है एक्चुअली, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल इनमें से वो कौन सी स्टेट्स होंगी इस स्टेट्स की जिनके अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट यू कॉल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज कॉन्फ़िगरेशंस एक्चुअली, and those probabilities can be computed through or by solving a maximization problem actually, okay. So in other words, so you have this entropy, okay, so the entropy can be written in the terms of Boltzmann constant and what do you call the probabilities, okay, of configuration, and then हम क्या चाहते हैं कि इस you know entropy को maximize करें, or the entropy of the system would like to maximize itself actually, okay, but subject to some constraint actually, और वो constraints क्या हैं, that the sum of the probabilities should be 1, और जो weighted average है of say energy of the each particle actually, ठीक है, their sum should be equal to the total or the total or the average energy of the entire system actually, ठीक है, वो जो fixed energy जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, this is what that you know you do in statistical mechanics actually, that कि आप entropy को maximize, so entropy would like to maximize itself, and you are interested in the probabilities of configurations, और वो probabilities आप कैसे मालूम करेंगे, by solving this optimization problem। अब मैं इसी के corresponding, okay, so I thought you know maybe कुछ missing हो मेरी तरफ से, but I want to give you an analogy from the you know what do you call I would like to give you an analogy from finance actually, okay, so and the analogy is like that। फर्ज कर लें आपके पास you know वहां आपके पास n particles थे, let's say that यहाँ पर आपके पास n stocks हैं, so A1 A2 and AN stocks हैं, और इनमें से हर एक स्टॉक का एक रिटर्न है। in other words, आपको पता है that कि भाई अगर आप you know इस स्टॉक में पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जितने भी आपके पास मौजूद हैं, वो आपको you know μ1 रिटर्न देगा, so it's like परसेंटेज देगा। फर्ज कर लें अगर 3 स्टॉक्स हों ABC, आपको पता है दैट कि अगर आप यू नो यहाँ पैसे लगाते हैं तो आपको ये 10% रिटर्न देगा, यहाँ पैसे लगाते हैं तो 5% रिटर्न देगा, और यहाँ पैसे लगाते हैं C स्टॉक में तो ये आपको आई डोंट नो 15% रिटर्न देगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब रिटर्न्स ज्यादा हैं तो फिर रिस्क भी इनके साथ एसोसिएटेड ज्यादा है, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि तीनों में इन्वेस्ट करें, मगर तीनों में कितना इन्वेस्ट करें, यानी मैं इंटरेस्टेड हूं ये दैट कि वो वेट्स क्या होने चाहिए, कितनी परसेंटेज में, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास $10K हैं या 10,000 रुपए हैं, गरीब सा बंदा हूं मैं, और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं इन 3 स्टॉक्स में, तो मैं कितनी परसेंटेज स्टॉक ए में इन्वेस्ट करूं, कितनी परसेंटेज ऑफ दिस 10,000 स्टॉक बी में इन्वेस्ट करूं, और कितनी परसेंटेज ऑफ दिस में स्टॉक सी में इन्वेस्ट करूं। सो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दीज परसेंटेजेस एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आपके पास n स्टॉक्स हैं और उन स्टॉक्स के रिटर्न्स हैं, और मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं यू नो एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करूं, ठीक है। अब यहाँ फाइनेंशियल टर्म्स में एंट्रोपी को आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, आई एम गोना टेल यू इन अ मिनट, बट इस एंट्रोपी को आप डिसएग्रीमेंट्स के, वहां डिसऑर्डर था, यहाँ डिसएग्रीमेंट बिटवीन ट्रेडर्स के तौर पे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, या जो ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं उनके दरमियान कितना डिसएग्रीमेंट है, उस डिसएग्रीमेंट को आपने इनकोड किया है इन द टर्म्स ऑफ शैनन एंट्रोपी, ठीक है। वहां क्या था, प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय द लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यहाँ क्या है, वेट्स मल्टीप्लाइड बाय द लॉग ऑफ वेट्स एक्चुअली, और मैं इस एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, और इस एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करने के लिए मेरा कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि जो सम ऑफ वेट्स होना चाहिए, ठीक है, वो 1 होना चाहिए, कांट बी 100%। और फर्ज कर लें मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं दैट कि ये एक मेरा एक फेवरेट नंबर है, ठीक है। फर्ज कर लें मैं ये चाहता हूं कि मैं ABC में इन्वेस्ट तो करूं अपने 10,000 रुपए, ठीक है, मैं ABC में इन्वेस्ट तो करूं, इतना यहाँ, इतना यहाँ और इतना यहाँ, मगर मैं इस तरह इन्वेस्ट करूं
कि इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो मुझे रिटर्न्स मिले, यानी जो मुझे प्रॉफिट मिले अपनी इन्वेस्टमेंट का, वो 15% मिले। फर्ज कर दे, मैं फिक्स कर देता हूं दैट कि मुझे इतना मिले, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट। So in other words, this MUP is like my wanted profit actually, okay, that I want to have. And then the question is, what are going to be the weights? वो कौन से weights हैं, जो कि वो कौन सी percentages हैं, ठीक है, of my $10,000, 10,000 rupees, whatever, ठीक है, कि जो मुझे 15% investment produce करें, ठीक है, in such a way that कि मैं इस entropy को maximize करें. So it turns out that you can solve this problem really easily through what you call Lagrange optimization method actually, ठीक है, बहुत आसानी से solve कर सकते हैं। और उसका solution ये है कि आपके weights जो हैं वो इतने होने चाहिए, ये होने चाहिए weights, exponential mu e to the lambda I, mu I are known to you, divided by z, so z is like a normalization factor, ठीक है। तो ये weights होने चाहिए। The only thing that you need to find is this Lagrange parameter, that is lambda actually, ठीक है। यानी आप इस पिछले प्रॉब्लम को जो constraint optimization method है, Lagrange optimization, I'm assuming that सबने multivariate calculus पढ़ा हुआ है और सबको Lagrange optimization आती है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हुए you can find the weights actually, ठीक है। So here's a concrete example, एक छोटा सा concrete example ये है। यदि फर्ज कर लें आपके पास 3 एसेट्स हैं और उन एसेट्स के बारे में पता है कि भाई अगर आप एसेट ए में पैसे लगाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का 5% जो है वो आपको रिटर्न के तौर पे देगा, प्रॉफिट के तौर पे देगा, ये 10% देगा, ये स्टॉक जो है 15% देगा। अब मैं इंटरेस्टेड हूं दैट कि मैं किस तरह इन तीनों में इन्वेस्ट करूं इन सच अ वे दैट कि जो शैनन एंट्रोपी है वो मैक्सिमाइज हो। सो इट टर्न्स आउट, और फर्ज कर दें दैट कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करूं। सो दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअली, आई वांट दैट कि 10% रिटर्न मुझे चाहिए, 10% प्रॉफिट मुझे चाहिए बाय इन्वेस्टिंग इनटू द ऑल 3 स्टॉक्स। कीप इन व्यू, इनमें से किसी एक स्टॉक में पैसे लगाना खतरनाक है, ठीक है, या तो बोरिंग है दैट कि आप कम रिटर्न वाले स्टॉक में अगर लगाते हैं, ठीक है, स्टॉक तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। मगर आप ज्यादा फॉर एग्जांपल रिटर्न वाले स्टॉक में लगाते हैं तो भाई ये रिस्की होगा, ठीक है, यू कैन लूज मनी। द बेस्ट वे इज दैट कि आप तीनों में लगाएं पैसे। सवाल यह है कि वो कितने पैसे लगाने चाहिए, ठीक है। तो यूजिंग दैट Lagrange ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मैं ये कंप्यूट कर सकता हूँ। सो व्हेन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला, वो म्यू आईज को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो दिस इज गोइंग टू बी माय वेट्स, और ये जो वेट्स होंगे these weights, इन वेट्स पर अगर मैं वो कॉन्स्टेंट अप्लाई करूं दैट के जी डब्ल्यू आई का सम जो है 1 होना चाहिए, और डब्ल्यू आई म्यू आई जो हैं उनका सम म्यू पी होना चाहिए, एंड म्यू पी इज माई 10%, ठीक है। तो अगर मैं इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं और फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करूं, दैट टर्न्स आउट दैट के जो लैम्डा है इट शुड बी 18.4, एंड इट टर्न्स आउट दैट अगर आप इस लैम्डा को उठाकर इन नंबर्स इन वेट्स में सब्स्टिट्यूट करें तो जो ये थ्योरी आपको सजेस्ट कर रही है वो ये कर रही है दैट के कीपिंग इन व्यू दिस इंफॉर्मेशन, आप अपने इन्वेस्टमेंट का 18% जो है तकरीबन इन्वेस्ट कर दें स्टॉक ए में, 34% जो है वो इन्वेस्ट कर दें स्टॉक बी में, और 47% जो है वो इन्वेस्ट कर दें स्टॉक सी में। Keep in view, you are getting this solution to the problem purely from physical interpretation, actually. ठीक है? And this is a part of a theory. It's called the Markowitz theory. So here is the thing: Markowitz got a Nobel Prize for it. Actually, he got a Nobel Prize for it. Okay, so this interaction of finance and physics is not only ये ना सिर्फ जो है it's like doing the what do you call giving you interesting applications, but since it is solving the real world problems, it has got several Nobel prizes actually, ठीक है। तो several Nobel prizes जो हैं वो भी मौजूद हैं। Ali bhai, do you want me to continue, or you think this is enough? I mean, there are a lot of examples. I can show you that spin glass जो है ये भी I can treat it as a model for financial market, or quickly maybe I just say that for example
how Riemannian geometry, like which is the mathematics of general relativity, you know, also has a relevance with finance actually. Okay, so for example, I think we know that अगर आप इन तमाम चीजों पे मुख्तसरन कमेंट कर लें तो एक तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या चीजें हैं और दूसरा Sure. Let me comment actually. Let me comment. I mean, it wouldn't take much time. Okay, so मैं थोड़ा सा comment कर देता हूँ इसके ऊपर. Okay, so for example, spin glass is what? Spin glass is, you know, last time आप ही के साथ जो है, I gave a talk on Nobel Prize. I think 2019 का 2020 का था, and I talked about the spin glasses. The spin glass is basically it's not really a glass, but it's a formulation. It's a state of matter actually. Okay, it's like जिसमें the particles are kind of frozen. Okay, so it's like in a certain you know, a way, okay, but in such a way that they have spins actually. Some particles have a spin up and some particles have a spin down actually. Okay. Now here's the thing. Now replace this particle or treat these particles as traders actually. Okay. So treat particles. पहले हम particles को हम क्या treat कर रहे थे as what do you call stock, ठीक है, या random quantity. Now treat particles as traders actually. ठीक है. Now as यहाँ particles which are in this spin glass configuration, ठीक है, यहाँ, you know, the particles have two kind of orientations that either it's going to be spin up or spin down actually. Okay, spin up or spin down. So similarly, traders can make two kind of decisions actually. Okay, that for a given stock, you know, trader can make a decision that, you know, what do you call? I'm gonna buy a stock or sell a stock actually. Okay, or you know, spin up का, you know, where, you know, like spins को अगर मैं SI से denote करूँ और -1 और +1 को, you know, इसको मैं, you know, spin up और इसको मैं spin down से you know relate करूँ और मैं ये कहूँ that के जी जो ith ट्रेडर है यानी ith पार्टिकल है, ठीक है, ith ट्रेडर है, you know, like it is making a decision, okay, of buying something, ठीक है, तो इसको मैं, like this corresponds to something that the particle having in spin up actually. Okay, so spin up means that, you know, same as that the trader is buying something. Okay, and spin down of a particle can be interpreted as that the trader is selling some stock actually. ठीक है. अब हमें ये पता, I mean, you must have seen, you know, people actually, वो बिल्कुल बहुत सारे WhatsApp ग्रुप्स में होते हैं और फिर उन ग्रुप्स को आप कहते हैं ये सिग्नल ग्रुप्स हैं भाई, ठीक है, ठीक है, या ब्रोकर्स होते हैं, लोग जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उनको पता है दैट कि दे आर इन डिफरेंट ग्रुप्स और उस ग्रुप्स में जो ना सिग्नल्स दे रहे होते हैं, ठीक है, आप कह रहे होते हैं भाई आज ये स्टॉक खरीद लो, लगता है ये ऊपर जाएगी, या स्टॉक बाय कर दो, ये लगता है कि ये नीचे जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. So you have these signal. अब वहां you can treat this as that the people have this herd mentality actually, ठीक है, that कि अगर, you know, for example, अगर आप, you know, यहाँ एक ट्रेडर बैठा है कि जिसने ये डिसाइड किया कि मैं एक सेल करूंगा चीज, तो उसका जो नेबरिंग ट्रेडर है वो ये देखेगा कि अच्छा यार ये क्या कर रहा है, so like this guy is basically selling the stock, maybe I should do either opposite, यानी मैं या तो बाय कर दूं या फिर मैं सेल कर दूं स्टॉक, ठीक है. So in other words, typically what people want to do, they have this, you know, herd behavior actually, that, you know, सारे लोग ही जो है, you know, या तो बाय करना शुरू कर देते हैं या सेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, and so on and so forth. Okay, so जैसे यहाँ ये पार्टिकल स्क्रीन, you know, interact कर रहे होते हैं and they had different configurations, you know, spin glass के case में you can say that, you know, you have some configurations that are satisfied and you have some frustrated configurations actually, ठीक है. तो यहाँ पर भी, you know, ये जो spin glass है जिसको मैं फाइनेंशियल मार्केट के तौर पे ट्रीट कर सकता हूँ कि जहां पर ये जो तमाम you know पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का मतलब एक ट्रेडर है और वो ट्रेडर बाय कर रहा है और सेल कर रहा है,
they interact actually, they share information, they see each other's decision actually, और उनकी बेस पर फिर वो अपने decisions ले रहे हो, ठीक है. अच्छा, and then you know, you have also something called external influence actually, ठीक है भाई. आज जो है ना वो इमरान खान साहब अंदर हो गए, ठीक है भाई, इसकी वजह से जो है वो सारे लोगों ने इंडिया ने हमला कर दिया जी, ठीक है. तो इस वजह से सारे लोगों ने जो है वो स्टॉक मार्केट नीचे चली गई, या जी अब जी है वो IMF का कर्जा मिल रहा है जी, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है. सो यू हैव दिस इंफॉर्मेशन कमिंग इनटू द मार्केट, ठीक है. And now this information could be also at individual level. बाज़ लोगों के पास specific information हो सकती है जो बाकी दूसरों के पास नहीं होती, या फिर it could be a general news actually, और उस information को आप फिर डिनोट कर रहे होते हैं किससे, H के साथ, ठीक है. So the way particles interact in a spin glass is same as that the traders see each other and make decisions actually. And then जैसे आप एक spin glass की configuration के लिए energy जो है वो हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं. सो यू कैन आल्सो राइट द हैमिल्टोनियन जो कि स्ट्रेस या डिसएग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. और इनकी जो ये टर्म्स हैं SI SJ रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरैक्शंस के जी, जो ट्रेडर्स हैं एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर एक दूसरे को देखते हुए दे आर मेकिंग डिसीजंस एक्चुअली, ठीक है. और JIJ इज रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरैक्शन के जिस रेट पे ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और HI इज like the information that that a trader has actually, और फिर उस information की बुनियाद पर फिर a trader is making a decision SI which could be +1 or -1 actually, ठीक है. और इन सब को sum करके you get a Hamiltonian जिसको आप energy function भी कह सकते हैं. It could measure the disagreement actually. So if had if the values of H are low, like they are near to 0 actually, आप ये कहते हैं that market जो है वो equilibrium के करीब है, every they are kind of having, या जो financial traders हैं वो एक herd behavior को जो है वो satisfy कर रहे हैं, ठीक है. और for example अगर market में so if H is a bigger number actually, ठीक है, positive negative, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज्यादा हरकत है, ठीक है ना. पीपल आर गोइंग क्रेजी एक्चुअली, ठीक है. दे आर some people are buying stocks, some people are selling and doing all kind of crazy things, ठीक है. Okay, so this is really, and then जैसे आप एक for example spin glass है, आप उस spin glass की configuration को अगर तब्दील करना चाहते हैं तो you have to expose it to temperature actually, आपको टेम्परेचर को एक्सपोज करना पड़ेगा, ठीक है. And the temperature की वजह से the spin, what do you call, the particles in the spin glass change their orientations, ठीक है. तो बिल्कुल इसी तरीके से what do you call, you can also have changes in this decisions that financial market or the traders in the financial market make due to the temperature. Low temperature का यहाँ क्या मतलब होगा? So by the way, temperature could be interpreted as what do you call, temperature could be interpreted as the randomness or noise or some kind of information that is coming into the market actually, ठीक है. एकदम से कोई information आई है मार्केट में और जिसकी वजह से मार्केट में जो है ट्रेडर्स ने जो है वो बाय और सेल करना शुरू कर दिया है, ठीक है. So if T goes to infinity, that means that the market has herding behavior. तमाम जो लोग हैं वो एक तरह से decisions ले रहे हैं, या तो सब बाय कर रहे हैं या तो सब सेल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है. और सब बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है that the bubble is being created. रियल एस्टेट में जैसे आप जाते हैं ना, that everyone is trying to buy. शुरू में जब boom था रियल एस्टेट का, everyone is trying to buy what do you call the real estate actually, ठीक है. प्लॉट खरीदने हैं भाई, ठीक है. So it's like a bubble of real estate actually, ठीक है. और जब for example सब लोग जो है वो सेल करना शुरू करते हैं, so this is like a crash of the market. इसको आप क्रैश के तौर पे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है. So as T goes to infinity, you can interpret it as the bubble, or you can interpret it as the crash actually in the market actually. High temperature से क्या मुराद है? That के जैसे for a spin glass, if it exposes to very high temperature,
you know, the spin glass, the atoms are the spins of the, you know, atoms in particles in the spin glass start to go crazy actually, ठीक है, वो तब्दील कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से। तो बिल्कुल इसी तरीके से हाई टेम्परेचर का यहाँ फाइनेंशियल सेंस में क्या मतलब होगा कि जी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा खबरें आ रही हैं अचानक से, ठीक है, that the people are going crazy actually, you know that people are going crazy. I mean, you know, the traders are behaving randomly into the market actually, ठीक है, कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट का, ठीक है। एंड देन यू क्रिटिकल टेम्परेचर को आप ये कह सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है, ये वो थ्रेशोल्ड है कि जिसके बाद यू नो ये वो इंफॉर्मेशन लेवल है कि जिसके बाद जो है, जिससे पहले कुछ हर्ड काइंड ऑफ अ बिहेवियर था ट्रेडर्स का, मगर इसके बाद द पीपल यू नो हैव इसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मार्केट की, ठीक है, वो एकदम से तब्दील हो जाती है, ठीक है, या तो बबल आ जाता है, यू नो, एकदम से तब्दील आ जाती है, यू नो पीपल स्टार्ट टू यू नो बिहेव और ट्रेड रैंडमली एक्चुअली, ठीक है। Anyway, so see, so there are analogies actually. You can see that analogies. There are analogies, very strong analogies between what you do in statistical mechanics and, you know, in the financial systems actually. And you can define magnetization and so on and so forth. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. Let me just give you the last slide. You know, even the you know, some general relativity and maybe the mathematics of general relativity also have a relevance with the finance actually. ठीक है, अगर आप के पास you know, you have 3 stocks for example, 3 or 4 stocks जितनी भी हैं, ठीक है, you have 4 stocks, और इन 4 स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, W1, W2, W3, W4 एक्चुअली, ये मेरे वेट्स हैं, ठीक है, आई कैन मेक इन्वेस्टमेंट। इनमें से हर स्टॉक का एक रिटर्न है, एक प्रॉफिट है जो कि अर्न कर सकते हैं, और एक रिस्क है, ठीक है। तो जब यू नो पोर्टफोलियोज को जो कि आप बना रहे हैं, ठीक है, जो कि आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना रहे हैं, दैट कि आप इतना % ए में इन्वेस्ट करेंगे, इतना % बी में इन्वेस्ट करेंगे, इतना % सी में, इतना % डी में, ठीक है, जब आप उन पोर्टफोलियोज के कलेक्शन को प्लॉट करते हैं, तो इट टर्न्स आउट दैट इट बिकम्स, से फॉर एग्जांपल, अ 4-dimensional manifold actually, ठीक है। You can interpret that space of the portfolios, okay, where each point is like a portfolio, ठीक है, इनमें से हर एक पॉइंट जो है वो एक पोर्टफोलियो की तरह, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की तरह है, ठीक है, that you can make to invest into the, what do you call these, stock, and the collection of such points becomes what do you call a manifold, in fact a manifold, a Riemannian manifold actually, okay. And once you have a Riemannian manifold, you can say that, okay, what is the meaning of a metric actually, okay. So the metric is, you know, metric की financial interpretation क्या है, the covariance between what do you call returns, ठीक है, आपके जो profits हैं उनके दरमियान जो covariance है, ठीक है, how they are related actually with each other, ठीक है, you can interpret that as a Riemannian you know, what do you call manifold, Riemannian metric. And then we know that if you have a Riemannian manifold, ठीक है, you know, you have notion of connection, and that can measure the curvature actually, ठीक है। तो curvature का finance के terms में क्या meaning होगी? The curvature has a meaning in finance that ये जो आपका space of portfolios है, ठीक है, does it have what do you call risk actually, ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि, you know, general relativity में you have this Riemann curvature tensor, ठीक है, और and if non-negativity of the Riemann curvature tensor tells you basically that कि आपका जो manifold है, ठीक है, Riemannian manifold है, it has a curve actually, so it is curved, okay, so it is curved. Now the interpretation of curved thing in finance is that कि जो space of portfolios आपके पास मौजूद है, it has, you know, a risk associated with it actually, ठीक है, so it has a collective risk actually. You can interpret the curvature as, so flat space means that, okay, आपके पास ऐसे portfolios हैं that are risk free, you can never make risk free portfolios actually, ठीक है। Geodesics वहाँ, you know, we know that has a specific meaning that, you know, it's like roughly the straightest possible path on manifold, ठीक है, you know,
और यहाँ फॉर एग्जांपल फाइनेंस के टर्म्स में जुडास्टिक्स का क्या मतलब होगा, दैट इट्स अ कर्व दैट गिव्स यू द कलेक्शन ऑफ द पोर्टफोलियोज, या आपको ऐसे पोर्टफोलियोज का कलेक्शन बता रहा है, ठीक है। सो इट इज अ कर्व, ओके, इट्स, क्योंकि इनमें से हर नुक्ता, इस कर्व का हर नुक्ता एक पोर्टफोलियोज का कलेक्शन है, मगर ये ऐसे पोर्टफोलियोज का कलेक्शन है कि जिनमें रिस्क बहुत कम है। So this is good actually, because what we want to do that के हमें ऐसे पोर्टफोलियो भी चाहिए कि जिनमें रिस्क कम से कम हो, मगर हमें एक और चीज चाहिए दैट के रिटर्न से ज्यादा हो। That's what we want. Okay, the judastics could be interpreted in the terms of collection of portfolios. ठीक है, you can, जैसे manifold के केस में connection gives you, you usually use Levi-Civita connection, ठीक है, that measures that that how much a space is curved, या जिसके terms में compute कर सकते हैं that के एक space कितनी curved है, ठीक है। यहाँ you can what do you call, interpret the connection as the rebalancing of the portfolios actually. Anyway, so all these have technical meaning. I know that I'm doing a lot of waving of hands, but इस सारे डिस्कशन का लुब्बे लुबाब ये है कि भैया अगर आपको फिजिक्स आता है तो एक दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है कि आप अपने फिजिक्स के स्किल्स से आए और फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंटर हो जाए। आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। एक कोर्स चाहिए आपको इकोनोफिजिक्स का, एक कोर्स चाहिए आपको फाइनेंस का, एंड यू आर रेडी टू डू व्हाट यू कॉल, यू आर रेडी टू डू enter into the financial world. ठीक है, with your favorite physics tools you can do finance that is actually producing the results. Okay, the results of making money, the results of protecting your investments, the results of making effective decisions, good decisions, sensible decisions about investments, that क्या अच्छे investments के decisions कीजिए। ठीक है जी, so that's it from my side. I know that I have done a lot of wave handings, but I mean, if you find it interesting, I can share resources with you, and we can sit and we can have a more, what do you call, longer set of sessions actually. ठीक है, so that's it from my side. Ali bhai. वंडरफुल सर, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। वाकई मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज्यादा फिजिक्स जो है वो फाइनेंस में इस्तेमाल हो रही है। आपने बिल्कुल एक विंडो नहीं बल्कि एक से ज्यादा विंडोज ओपन की हैं हमारे लिए। ओके, सो पार्टिसिपेंट्स में से कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिएगा ताकि आपका सवाल ले लिया जाए। चैट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हाउ स्टोकेस्टिक contribute in data science, or there's no role of stochastic or finance in data science? तो डेटा साइंस और stochastic और financial analysis के साथ कोई लिंक? There is. I mean, you see that ये जो चीजें हैं ना, data science and stochastics and physics, like almost these are indistinguishable actually. आप differentiate ही नहीं कर सकते, it's really difficult to define boundaries actually. ठीक है, that कि आप किसे physics कहें, किसे finance कहें, किसे, so there is, for example, almost all of the important algorithms that are you use for जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं data science में, data analytics के लिए, ठीक है, या आप for example AI machine learning के जितने भी बड़े-बड़े what do you call algorithms हैं, ठीक है, they all use what do you call the stochastic tools actually. You might have heard of, say for example, stochastic gradient descent methods actually. That is one of very frequently used tool in data science actually. Okay. Even just stochastics, I mean, if you really see, here's an interesting thing. Stochastics was developed by a rocket scientist actually, whose name was Kyoto Ito actually. So he was a Japanese mathematician, not a mathematician, rocket scientist actually, physicist, and he wanted to describe
what do you call the trajectories of a rocket that you project actually, ठीक है. तो उसकी trajectories जो हैं अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो उसको describe करने के लिए he introduced or used this notion of Wiener process and Brownian motion, and उसके नतीजे में पूरी theory जो है वो develop हुई, ठीक है. जैसे मैं कहता हूँ ना कि you have I think Robert Dagraff ने ये कहा था. So usually Wigner, we know that there is an unreasonable effectiveness of mathematics in physics and nature. What unreasonable effectiveness of mathematics? Okay. So Robert Dagraff says that there is an unreasonable effectiveness of quantum mechanics and mathematics, and I say that there is unreasonable effectiveness of quantum mechanics in finance. Actually, probably it's reasonable. Who knows? But it's और मजे की बात ये है, so here's a key thing. आप उठाएं मॉडर्न फाइनेंस की किताबें, आप हैरान हो जाएंगे कि भैया ये प्योर मैथ है, ये फिजिक्स है, ये फाइनेंस, इसमें फाइनेंस कहाँ है? You will, so it's like theorems and differential equations and probabilities and all kind of जैसे जब मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट जिस एरिया में जाएंगे ना तो उस एरिया को वो मैथमेटाइज्ड या वो फिजिक्स का जामा पहना देते हैं. तो बिल्कुल इसी तरीके से फिजिक्स, द मॉडर्न फाइनेंस, I mean, if you really see the frontier of the finance actually, ठीक है, if you really see the frontier of finance is finance वाले जब वो पढ़ रहे होते हैं तो they just think that इसमें finance कहाँ है भाई, because all of the finance has been written now in the terms of maths and the tools from the physics section. Okay. So it has connection, obviously. Stochastics is everywhere. मैं तो ये अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था ये कट जामैंगल का एक इंटरव्यू, एक हार्वर्ड के प्रोफेसर है. So वो he was giving this he was saying that one of the reasons that you are not able to, for example, quantum mechanics or general relativity को या gravity को quantize इसलिए नहीं कर सकते हैं because you have a wrong theory of gravity. जो gravity की theory होनी चाहिए वो stochastic theory होनी चाहिए. You should have a stochastic general relativity actually. So stochastic is dominating, okay, in the variety of areas. तो अगर आप एक physics के graduate हैं, like आपकी ये reading lists पर होना चाहिए, learning lists पर होना चाहिए that यार ये चीजें हैं जो कि हमने सीखनी है. I mean, if you want to do good physics or something which is physics dependent like finance actually, that आपको इन सब tools की जरूरत पड़ेगी. Sir, Ali bhai, anything else? किसी और का कोई सवाल या कमेंट है पार्टिसिपेंट्स में? फिजिक्स के कितने बच्चे हैं? तो फिजिक्स के बच्चे आई नो दैट के सब कुछ मैथ के लोग तो हैं. फसी भाई भी हैं, जी. मेरे को इदरीस आजाद भाई कह रहे हैं कि इदरीस साहब, इदरीस साहब आप अनम्यूट कर सकते हैं तो आप कर लें, बात कर लें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर. वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अच्छा सर, मैं सर खुश हुआ हूँ बहुत. मैं आखिर में पहुंचा हूँ जनरल रिलेटिविटी की जब बात आप कर रहे थे उससे थोड़ी देर पहले. मुझे खुशी इस बात की हुई है कि ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अंदाज में आपने इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन्स को टच किया है, एक ही इसमें पिरोया है, एक ही लड़ी में. तो इससे मुझे ये आ रहा था कि हमारे नमल में भी और इस्लामिक में भी आजकल रोज़ एक बात होती है हर तकरीबन मीटिंग में कि जब से चैट जीपीटी आई है तब से इंटरडिसिप्लिनरी जो है होलिस्टिक टॉप डाउन स्ट्रेटजी जो है नॉलेज की, वो बड़ी तेजी से प्रमोट हो रही है पूरे वर्ल्ड में. तो एकेडमिक लेवल पे ये ऑलरेडी चल रहा था. तो कमेंट मेरा ये है कि जिस तरह आपने जनरल रिलेटिविटी को बयान किया है इसके पैराडाइम में, एग्जैक्टली इस तरह का म्यूजिक के हवाले से मैंने सुना था और एक बायोलॉजी के हवाले से, सेम म्यूजिक के हवाले से और बायोलॉजी के और आपके तीनों हवाले से एक बात मेरे जहन में आ रही है जो छोटा सा क्वेश्चन भी मेरा बन रहा है कि सर ये फिर एक सब्जेक्टिव स्पेस टाइम ऑलरेडी जो है इसमें हाइपोथेसाइज की जा रही है
लेकिन ये है तो फर्स्ट पर्सन ना सर, ये आपका जितना भी था ये कंप्यूटेशनल या इंफॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड चीज लग रही है मुझे। व्हाट डू यू से अबाउट, यानी सब्जेक्टिव है ये, हाँ, जनरल रिलेटिविटी की तरह से ऑब्जेक्टिव। यानी मेरा आई मीन इफ आई ट्राई टू Yes, sir. समराइज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि यू नो ये जो फिजिक्स के टूल्स है, जनरल रिलेटिविटी हो, इंफॉर्मेशन थ्योरी हो, या स्टोकास्टिक्स हो, या क्वांटम मैकेनिक्स हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो, ये तमाम चीजें एक गॉगल्स की तरह हैं, ठीक है। और ये जो गॉगल्स हैं they allow you to not only see things in, say for example physics, ठीक है, उनको समझने के लिए आपको हेल्प आउट करते हैं, बल्कि इन गॉगल्स की मदद से you could see actually the other areas actually, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स में भी एक बड़ी तहरीक लैंगलैंड प्रोग्राम चल रहा है दैट कि भाई आप कैसे यूनिफाई कर सकते हैं म्यूजिक को, हार्मोनिक एनालिसिस को, ज्योमेट्री को, मैथमेटिक्स को, नंबर थ्योरी को, और फिर इन तीनों एरियाज के प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना नंबर थ्योरी में, आप उसे हार्मोनिक एनालिसिस के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, वहां सॉल्व करें, एंड देन यू रिटर्न बैक टू व्हाट यू कॉल नंबर थ्योरी एक्चुअली, ठीक है। the same is the case here actually, that जब एक फिजिसिस्ट, एक डिफरेंशियल ज्योमेटर, एक जनरल रिलेटिविटी का एक्सपर्ट, एक क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सपर्ट, एक फाइनेंस के प्रॉब्लम को देख रहा है, ठीक है। और यही इनसाइट थी, आई मीन वो लोग जिन्होंने असगर कादर साहब की क्वांटम मैकेनिक्स की टॉक सुनी हो, अब तो वो नहीं कर पाते प्रिसाइसली उस तरह से डिस्क्राइब, मगर अगर आपने उनकी टॉक सुनी हो तो लाइक ही रियली सेज दैट के मैंने ये रियलाइज किया कि यार ये जिस तरह इकोनॉमिकल मार्केट्स में ये जो जैसे लोग ये डिसीजंस ले रहे हैं, ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे पार्टिकल्स जो है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर आप कंसीडर करें तो वो जिस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ये तो बिल्कुल वैसे ही ये जो ट्रेडर्स हैं एक फाइनेंशियल मार्केट में, ये बिल्कुल उसी तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं वो जो मेरे स्किल्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, क्यों ना वो जो क्वांटम थ्योरी में जो जानता हूँ, मैं इस इकोनॉमिक्स को उस क्वांटम थ्योरी के शक्ल में लिख लूं, या उस he wrote a paper actually, and he wrote a paper and really like a foundational paper in quantum mechanics, and that's what people do actually, that जो डिफरेंट नुक्ता निगाह के लोग हैं, ठीक है, जब वो अपने से मुख्तलिफ किसी एरिया को देख रहे होते हैं तो फिर दे रियलाइज दैट कि अच्छा यार ये तो बिल्कुल वैसे ही है। जैसे भी कुछ देर पहले, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, ठीक है, कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था अबाउट डीएनए कंप्यूटिंग एक्चुअली, ठीक है। सो देयर वाज अ मैथमेटिशियन, वो अपने जो है जाता है समर टाइम में जाता है वो एक बायोलॉजी लैब में, 70s की बात है, ठीक है, और वहां पर जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं 70s 80s की डीएनए की, ठीक है, एंड देन he also observes that data and he वो ये कहता है कि यार ये तो बिल्कुल ये डीएनए बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है कि जिस तरह कोई भी कंप्यूटिंग टूल कंप्यूटिंग कर रहा होता है। तो अगर ये ऐसा ही है तो फिर can I do the computations using what do you call this biological DNA? And it turns out he solved that problem actually. He solved एक वो हम कहते हैं scheduling problem, उस scheduling problem को biological DNA के through जो है that guy solved actually, and it really started a new area जिसे हम DNA computing कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मुख्तलिफ नुक्ते निगाह के लोग हैं, जब वो अपने एरिया के अलावा बाकी दुनिया को देख रहे होते हैं तो फिर दे फाइंड एक वहदत उनको मिलती है, ठीक है, उनको एक नजर आता है कि अच्छा यार जिस तरह मैं अपनी चीजों को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, अपनी फिजिक्स की चीजों को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से मैं उसी नुक्ते निगाह से फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, या किसी और बियोलॉजी की जैसा आपने तस्करा किया, या म्यूजिक की चीजों को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। And that's what we do. That's what people have been doing actually. I mean, the music has
a very rigorous mathematical foundations actually. Mathematics of music is a pretty old area actually. ठीक है, I mean the Indian जो Bharma Gupta school है, ठीक है, you can trace back relationship of mathematics with would ढोलकी बजाने को जो है उन्होंने उस दौर में रिलेट किया था कॉम्बिनेटोरिक्स के साथ बेसिकली, ठीक है, साइंस ऑफ काउंटिंग के साथ. सो थिंग्स आर आई डोंट नो, मेरा तो ये पता नहीं क्यों एक तरह से वो हो रहा है कि चीजें जो है वो एक वहदत की तरफ जा रही हैं, चीजें यूनिफाई हो रही हैं. इंटरडिसिप्लिनरी भी हैं मगर उसके साथ साथ हम बेसिकली उस तरफ जा रहे हैं कि कैसे यू कैन हैव a unique set of tools और उन unique set of tools की मदद से आप तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें, चाहे वो साइकोलॉजी में हो या बायोलॉजी में हो, ठीक है. ऑलरेडी मैथ्स इज डूइंग इट इन सम सेंस कि मैथ्स ही आपके पास वो जुबान है कि जिसकी एक यूनिक टूल है कि जो आपको अलाउ कर रहा है टू डिस्क्राइब थिंग्स इन ऑलमोस्ट एनी एरिया. बट जब मैंने ये पहली दफा फिजिक्स और फाइनेंस का इंटरेक्शन पढ़ा था, रियली गॉट इंटरेस्टेड इन दैट एक्चुअली, दैट ये तो बड़े मजे की चीज है. फिजिक्स सीखने का शौक है, शौकिया पढ़ता रहता हूँ मैं. फाइनेंस जो है वो थोड़ा बहुत बिजनेस है, सो दिस काइंड ऑफ ब्रॉट मी क्लोजर टू इकोनोफिजिक्स. और मैं ये कहूँगा कि आई डोंट नो दैट आपके जो अंडरग्रेड फिजिक्स के प्रोग्राम चलाने वाले हैं लोग, यार उनको कोई सजेशन दो कि भाई इस किस्म के कोर्सेज भी आप रखें, अपने अंडरग्रेड का करिकुलम का हिस्सा बनाएं, बच्चों को एक्सपोज करें कि इस किस्म के एरियाज भी जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. सो या आई डोंट नो दैट कि मैंने बड़ी नॉन लीनियर सी बात कर दी उनके इदरीस साहब के रिस्पांस में. थैंक यू वेरी मच. जी, किसी और का कोई कमेंट या सवाल? अच्छा, आखिर में एक बार फिर मैं जरूर कहूँगा, आई एम नॉट अ फिजिसिस्ट, ठीक है. मेरी जो फिजिक्स की डिस्क्रिप्शन से उस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना कीजिएगा, उसे जरूर आप स्केप्टिक निगाह से देखें. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो या ये सारे टॉपिक्स जो हैं, क्वांटम मैकेनिक्स है, मैं मुझे सिर्फ आप एक ऐसा समझ लें दैट के एक शख्स के सॉन्ग के की तरह समझे जो कि आपको तवज्जो दिला रहा है, फिजिक्स के लोगों को तवज्जो दिला रहा है कि इस तरफ भी तवज्जो कीजिए, एक दुनिया मुंतजर है आपकी. बिल्कुल. और मैं खुद भी बल्कि चलें फाद का सवाल ले लेते हैं, मेरा कमेंट बाद में फिर हो जाएगा. फाद कर लें सवाल. सर मेरा सवाल यह है, ये जो आपने सारी चीजें बताई, हमने ये सारी चीजें क्लास में भी की हुई हैं, सारी मॉडलिंग वगैरह, ये प्राइसिंग ऑफ द बॉन्ड और ये सारी ब्लैक-शोल्ड डेरिवेशन वगैरह. अब एक सवाल ये है बिल्कुल आम सा, ये कि जब कोई बाहर का बंदा, जैसे आपने अभी कहा कि दूसरी फील्ड का बंदा इस चीज को देखता है अपने नुक्ते निगाह से, उसको लगता है यार जो मेरे पास टूल है वो काम मैं भी कर सकता हूँ. तो जो टूल्स पहले से मौजूद हैं, जो लोग फाइनेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इम्पैक्ट क्या होगा? क्वांटम वाला बंदा अगर इधर आता है, फिजिक्स वाला बंदा इधर आता है, जैसे मेरा अभी मास्टर्स में जो एडमिशन है वो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ है. तो एक सवाल तो यही बनता है सीधा सीधा सा कि वो क्यों आए जब पहले से इतने अच्छे टूल्स मौजूद हैं? क्या वो सही से काम नहीं कर रहे? क्यों हमें जोड़े चीजों को? पहले से टूल्स मौजूद नहीं हैं. आई मीन पॉल सिमिल्सन से पहले, ब्लैक-शोल्स मॉडल से पहले, there was a drought actually in finance. Financial world was moving in a running in a completely different way than post Black-Scholes era. ठीक है. बहुत सारे stock is a monster that we still don't understand actually. I mean, this model from quantum mechanics, for example, that कि आप stock को एक particle के तौर पे समझ लें, ठीक है, is a good model, but it's not a good enough model actually. I mean, obviously, अगर ऐसा होता तो we would be able to predict the stock और फिर रातों रात जो है वो हम अमीर हो सकते थे. But they are good models, but they're not good enough models actually. ठीक है. तो इन सारे models में अभी भी कमियां हैं और
जो फाइनेंस के लोग हैं, ठीक है, वो जो इससे पहले फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लोग थे, ठीक है, जो अब भी हैं, जो कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल फाइनेंस कर रहे होते हैं या कॉर्पोरेट फाइनेंस कर रहे होते हैं, या लाइक दे आर नॉट like they know that there are problems, ठीक है, but they didn't have tools to address those problems actually. और यहाँ फिर जो है, you have the physicists, you have mathematicians basically coming in with their tools and solving their problems actually, ठीक है. For example, Black-Scholes ने जो central problem solve किया था, ठीक है, बैचलर ने सबसे पहले 1900 में she gave this complete description of mathematical model of financial markets actually. बैचलर ने सबसे पहले दिया, ठीक है, और उसने जो है वो ये भी बताया that कि options is something that कि जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ किस्म के रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है. बट ही सेड दैट कि यार मुझे ये नहीं पता कि इसको मैं प्राइस कैसे करूं, इस ऑप्शन का प्रीमियम क्या होना चाहिए, आई डोंट नो दैट, ठीक है. एंड आफ्टर बैचलर्स तकरीबन को 60-70 साल जो है वो लोग कोशिश करते रहे दैट कि यार किसी तरह से हम इस ऑप्शन को प्राइस कर दें, किसी तरह से हम इस ऑप्शन को प्राइस कर दें. मुश्किल ये है दैट कि ये जो ऑप्शन जिस एसेट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, वो रैंडमली मूव करता है. ब्लैक-शोल्स से पहले लोग उस रैंडमनेस को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, which is a crazy idea. और फिर they were making all kind of crazy models. हम ना ट्रेडर के दिमाग को मॉडल करते हैं, हम ना ट्रेडर के ग्रीड को मॉडल करते हैं. I mean they were so what Black-Scholes did is that rather than measuring that randomness, they found a way to get rid of that randomness actually. यानी उनका जो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन था ना वो ये कि उन्होंने रैंडमनेस को एलिमिनेट कर दिया ऑल टुगेदर इन प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है. एंड इसके नतीजे में फिर आपको ब्लैक-शोल्स इक्वेशन मिलती है और उसका सोल्यूशन मिलता है, ठीक है. तो मुझे बताएं कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के लोग वो 60-70 साल से करते रहे कोशिश के यार किसी तरह से ऑप्शन को कर दें प्राइस, बट दे कुडंट फाइंड अ वे एक्चुअली. एंड हियर इज अ mathematician or a physicist coming to rescue actually, ठीक है. तो he like Fisher Black and Manifolds, they solve the same problem, ठीक है. So science, finance science बन चुकी है, and science is not anyone's territory. You can expect that कि हो सकता है कि आगे चल के just on a lighter note को एंथ्रोपोलॉजी का बंदा जो है ना आपको कोई ऐसी इंसाइट दे दे कि जिससे आपको फिजिक्स का बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दें. Who knows? साइंस किसी की टेरिटरी नहीं है, साइंस किसी की मीरास नहीं है. साइंस इज आवर कलेक्टिव विजडम. साइंस इज in सब साइंस के बॉडी ऑफ नॉलेज में हम सब ने कलेक्टिवली ऐड किए हैं अपने आयोटाज एक्चुअली, अपने डॉट्स, ठीक है. सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे और भी ऐसे लोग होंगे जो कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट एरियाज के जो फाइनेंस की तरफ तवज्जो करेंगे और फाइनेंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं using their tools actually, ठीक है. बिल्कुल physics is also suffering similar kind of problems. physics के अपने मसाइल हैं और लोग बहुत कोशिश कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल दिस compatibility between gravity and general relativity, it's a issue, it's a big issue. क्वांटाइज कैसे करें ग्रेविटी को, अभी तक कोई कुछ नहीं कर सका, ठीक है. You have people like Witten, mathematician who are coming up with all kind of what do you call new mathematics, new proposals actually, that ke bhai that's how string theory is maybe a way to what do you call make both of the gravity and quantum mechanics work together. Who knows? अभी भी प्रॉब्लम है. हो सकता है कोई एक बाहर से शख्स आए जो इसी प्रॉब्लम को देखे, मैथमेटिक्स का हो या किसी और एरिया का हो, इस प्रॉब्लम को देखे और वो कोई मजे का सोल्यूशन सजेस्ट कर दे, ठीक है. तो हमें नहीं डिफाइन करनी चाहिए बाउंड्रीज एक्चुअली. आई थिंक इंटरनेशनली तो होते हैं कोलॉक्वियम्स अक्सर जिसमें ना मुख्तलिफुल ख्याल लोग आते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं आइडियाज, और अक्सर ऐसा होता है कि उसमें people see the different problems with the different goggles, उसके नतीजे में they propose different solutions actually. तो मेरा ख्याल है कि
चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें फाइनेंस भी सीखनी चाहिए, बियोलॉजी भी सीखनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहेंगे तो मैं इंटरेस्टेड हूँ हर उस जगह जहाँ स्टोचैस्टिक्स इन्वॉल्व है, चाहे वो बियोलॉजी हो, फाइनेंस हो, फिजिक्स हो, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट एरिया। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरा एरिया जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो किस तरह से दुनिया से कनेक्टेड है, लोग किस तरह सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैं किस तरह अपनी बाउंड्री डिफाइन कर दूं दैट मैं मैथमेटिक्स और स्टोचैस्टिक्स की बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा। बाउंड्रीज आर वेग, ठीक है। पीपल can go into the any areas and I would encourage you to do as well actually, that कि आप सीखें, इंटरडिसिप्लिनरी सीखें और सीखें in such a way that के आप कंट्रीब्यूट करें अपने डिसिप्लिन से आगे बढ़ के भी नए डिसिप्लिन में। थैंक यू जी बिल्कुल। मैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे जाहिर है कि उलूम बढ़ते हैं उनमें वहदत भी पैदा होती है, लेकिन अगेन हमारे समाज के अंदर तो बुनियादी साइंस की ही अभी तक मजबूत नहीं है। डीप ओशंस तो हमेशा साइलेंट होते हैं, फ्रंटियर्स पे लहरें बहुत होती हैं, जैसा कि आपने स्ट्रिंग थ्योरी और बाकी चीज़ों का जिक्र किया। फ्रंटियर्स पे हर मजमून में लहरें बड़ी बड़ी उठती हैं, लेकिन हमारी तो अभी तक बच्चे को अभी तक ये नहीं पता होता कि 0.003 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ये मैं फंसी मलक का जुमला उठा रहा हूँ तो बिल्कुल ऐसे ये अपनी बुनियादें मजबूत किए बगैर, जैसे आपने मतलब आपने पाथ इंटीग्रल की बात की है, तो अभी तक हमारे अंडरग्रेड में पाथ इंटीग्रल शामिल ही नहीं है कोर्स में। तो वो कैसे यानी निकला जा सकता है अपनी हदूद से जब तक आप बुनियाद से वाकिफ। तो ये एक चीज। दूसरा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, आप ज्यादा लंबा चाहे आप कमेंट ना भी कीजिएगा। मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे एक फिजिक्स की एक मैथमेटिकल लैंग्वेज थी ना, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स लीनियर अलजेब्रा पे खड़ा है, और उसको ट्रांसलेट किया है या उसको इंटरप्रेट किया है एक सोशल सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सप्लेन किया आपने, तो एक लैंग्वेज का जो मूव ओवर है वो तो समझ आता है। लेकिन नेचुरल साइंसेज के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन का टेस्टेबल होना, रिपीटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना साइंस में। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम्स में मैथमेटिक्स रोल ओवर हुआ है क्वांटम का या डिफरेंशियल ज्योमेट्री वगैरह का, तो इसकी जो टेस्टेबिलिटी है या प्रिडिक्टेबिलिटी है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक at the एक टेस्टेबिलिटी फॉर एग्जांपल ये है that say for example ये Black-Scholes formula है which is like the price of option contract actually, ठीक है। Black and Scholes ने उसे find किया by solving Black-Scholes differential equation, ठीक है। Merton ने वही formula find किया, they came up with the precisely same formula, ठीक है, but from measure theoretic probability, उन्होंने probability का framework इस्तेमाल किया, and now for example people have used this path integral formalism actually, and they are coming up with the precisely same formula actually, ठीक है, and precisely what do you call same results, ठीक है। So I think this is like passing the one basic test actually, ठीक है। बाकी रही बात ये, I think this area of econophysics is still in its infancy actually, ठीक है। यानी यहाँ चीजें अभी मिच्योर नहीं हो रही हैं, because मिच्योर हो रही हैं अभी, ठीक है, because you have seen because you have people have seen analogies between say quantum systems and financial systems, ठीक है। So उन्होंने वो टूल्स अप्लाई किए हैं टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल सिस्टम्स, और वो वही नताइज हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम्स, कि जो फॉर एग्जांपल किसी और स्टैटिस्टिक्स से या मैथमेटिक्स से या किसी और टूल के थ्रू जिन नताइज तक आप पहुंच सकते हैं उन्हीं फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में। सो आई थिंक दिस इज लाइक वन वे टू पासिंग द टेस्ट। सो एक और चीज दैट आई वुड से is
is that you know, I would say from the perspective of अगर हम ये कहें कि क्या कोई ऐसी कंप्लीटली नई फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस हैं जो कि किसी और टूल के थ्रू से मैथ्स के थ्रू या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू नहीं की गई. I haven't encountered. There must be something, but I haven't encountered actually. ठीक है. इस वक्त तक जो लोग कर रहे हैं इकोनोफिजिक्स में, वो यही कर रहे हैं दैट के जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है फाइनेंस की, ठीक है, उस थ्योरी और उसके नताइज को वो यू नो फिजिक्स के टूल्स के थ्रू बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. और मेरा ख्याल है कि you know, if something that can come up with you know, completely new results in finance, and you know, that's what people are also trying to do, is going to be quantum computing. Actually, मेरा ख्याल है कि the quantum computing is something that is you know, is going to, you know, bring some new things in table actually, because बहुत सारे इस किस्म के algorithms लिखे गए हैं, इस किस्म के नताइज निकाले गए हैं. ठीक है. at least theoretically. ठीक है. कि अगर you know, उन नताइज को validate करना है, ठीक है, so you need to do those computations on quantum computers actually. और फिर quantum computers का हमें पता है that कि you know, वो exist तो कर रहे हैं इस वक्त, but they are existing for doing some specific kind of calculations actually. I mean, Willow है, वो एक specific kind of calculations कर रहा है, या Chinese ने जो भी कुछ अर्सा पहले डिक्लेयर किया है कि हमने you know, एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, मतलब वो खास किस्म की कैलकुलेशन, वो जनरल पर्पस नहीं है इस वक्त. ठीक है. तो I have encountered some you know, some predictions based on you know, quantum theory. ठीक है. quantum computing actually, जो के verify और validate तभी हो सकती हैं कि जब you know, you have a quantum computer in classical computer पे उनको achieve करना मुमकिन नहीं. तो I would say that कि एक validation, जैसा आपने कहा कि यहाँ कोई experimental result उस तरह से नहीं है. So you know, वो जैसे आप physics में कर रहे होते हैं ना, that you have experiments and then you want to reproduce those results and then that becomes a fact actually. ठीक है. तो यहाँ उस तरह से अभी तक you know, ना ही वो चीज़ें उस तरह से exist करती हैं, because जो human माइंड है, ह्यूमन का ग्रेड है, एक ग्रीड है, ट्रेडर जिस तरह से ट्रेड करना चाहता है. ठीक है. आई डोंट थिंक दैट, यानी I still am a skeptic actually that you know, a particle is a good representation actually. ठीक है. You know, a particle, you know, doesn't have a consciousness, while a trader has a consciousness actually. ठीक है. और स्टॉक की जो मूवमेंट है वो नतीजा है जो ट्रेडर्स डिफरेंट डिसीजंस कर रहे होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्चुअली. तो दो इट्स अ वेरी गुड एनोलॉजी, दो इज अ वेरी गुड एनोलॉजी दैट you see between the physical systems and financial systems, but you know, there are limitations still too actually. So you know, for me, I'm satisfied in a sense that कि मुझे अगर प्राइस करना है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, मुझे क्रेडिट रिस्क कंप्यूट करना है एक. ठीक है. तो वो क्रेडिट रिस्क कंप्यूट करने का एक टूल जो है अब मेरे पास, along with the stochastics and differential equations and probabilities, अब मेरे पास quantum mechanics भी है, path integrals भी है. ठीक है. And it's giving the same results as the other theories are giving actually. So you know, that's is my rough response. Thank you so much. बस एक लास्ट क्वेश्चन या कमेंट अगर कोई करना चाहते हैं तो करते हैं, and then we will wrap up. जी, कोई सवाल या कमेंट? मेरा एक कमेंट है. ठीक है. यू नो, जो मैंने शुरू में दरख्वास्त की ना, यानी अली भाई कहीं भी यू नो, एटलीस्ट आई प्रोपगेट दिस, मैं तो इसको प्रोपगेट करता हूँ. किसी दिन हम ये भी रख सकते हैं कि
what's wrong with, discuss कर सकते हैं that what's wrong with the mathematics curriculum in Pakistan. Actually the same, I think the same is true for physics too actually. ठीक है, मेरी नजर में I think, I don't know, maybe I'm wrong, maybe I'm thinking in a different way actually, but मेरी नजर में physics graduate or undergraduate, like उसका करिकुलम जो है ना, उसमें ये एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए. I'm not saying इकोनोफिजिक्स भी जरूर होना चाहिए, हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इलेक्टिव्स के तौर पे जरूर होना चाहिए, मगर अच्छा अंडरग्रेड फिजिक्स जो है वो अच्छा मैथमेटिक्स उसमें पढ़ाया जाना चाहिए. फिजिक्स वो कंप्यूटिंग सेंट्रल एक टूल है. आई डोंट नो दैट के कंप्यूटिंग या कोड करना अली भाई सिखाया जाता है कोई, होते हैं कोई प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हमारे पाकिस्तान के अंडरग्रेड फिजिक्स में? अब इन्होंने शामिल किए हैं जो नया एचईसी का सिलेबस आया है ना, बल्कि मैं अच्छा, देख रहा उसमें था, है. मुझे किसी ने भेजा, जो एचईसी ने रिकमेंड किया है, एक कोर्स फिजिक्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके कोई नाम है. तो मैं उसका सिलेबस देख के परेशान हो गया. मैंने कहा यार ये तो एमआईटी में भी इतना कुछ नहीं पढ़ाते, हाँ, लेकिन नहीं बढ़ाते, नहीं बढ़ाते. उन्होंने असल कोई में मेरी दुनिया से मेरी टॉपिक मेरी उठाए नजर और डाल दिए में बस उसमें. हाँ, मेरी नजर में जो है ना, कोड करना भी जो है ना एक स्किल है जो ओवर द टाइम डेवलप जी, होता है. ठीक बिल्कुल है, यानी बिल्कुल. जी. कंप्यूटिंग तो मेरे ख्याल पहले कंप्यूटेशनल फिजिक्स एक इलेक्टिव के तौर पे था, लेकिन अब काफी जगहों पे उन्होंने लाजमी कर दिया. अब मैं आपको अपनी मैथ की बात बताता हूँ. लाइक मैथ में हमने जो करिकुलम यहाँ आईबी में रखा है वो ये है कि भाई पहले सेमेस्टर से आखिरी सेमेस्टर तक कोई ना कोई कोडिंग का कोर्स जरूर होगा. वो सी पढ़ेंगे, वो पाइथन पढ़ेंगे, वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड्स का कोर्स पढ़ेंगे, विच इज गोइंग टू कंटेन अ लैब, ताकि ये 5-6 सेमेस्टर आप मुसलसल कोड करना सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं ना, तो इवेंचुअली वो इंटरनलाइज हो जाते हैं वो कोडिंग के स्किल्स. एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्किल एक्चुअली जो कि आना चाहिए फिजिक्स के, मेरी नज़र में, ग्रेजुएट को. आई डोंट नो, मैं तो जब एस्ट्रोनॉमी देखता हूँ, अभी वो एक बच्ची है हमारी, वो रॉचेस्टर गई है एस्ट्रोफिजिक्स में करने, बस वो कंप्यूटिंग ही कर रहे हैं. ऑल दिस इज बेसिकली डाटा साइंस हर एंड जगह ही कंप्यूटिंग है सर. मैं जब कंप्यूटिंग है. यहाँ पे मेरा तो जब अगर वो एडमिशन हुआ है तो था. लाइक व्हाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, यानी उसको हाँ, सिस्टमैटिकली इट क्यों शुड नहीं बी. हम, तो ये शोर शराबा जरूर डालना चाहिए, या कम से कम बिल्कुल बिल्कुल. बच्चों को जरूर बताना चाहिए कि यार सीखना शुरू करो आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है, मैथमेटिका चला लेना काफी नहीं है, मैटलैब चला लेना, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन उस पर सॉल्व कर देना काफी नहीं है, कोई थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होना चाहिए मेरे ख्याल से. जी जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं. बल्कि कंप्यूटिंग से पहले हमारे दौर में जिस चीज का चर्चा था वो था एक्सपेरिमेंट्स. हम अक्सर सुना करते थे, देखें जी, जब भी फिजिक्स पढ़ाएं ना, तो हर फिजिक्स के टॉपिक के साथ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ताकि आप होना चाहिए. उसको रियल लाइफ में देख सकें. तो अभी तक हम वहां तक तो नहीं पहुंचे, तो अब हम कंप्यूटिंग का हम शॉट डालेंगे. तो लेकिन लेट्स अच्छी सी हाउ इट सजेशन. गोज. मगर ये है कि बच्चों को जो है ना वो जरूर करना चाहिए. मैं कहता हूँ जी उनको जी, हाँ जरूर आप दिखाएं, दे फाइंड आउट देयर ओन वे एक्चुअली. आप हाँ सीन हाँ, जिसने पढ़ना है खुद ही आप पढ़ना है. अगर हमको सिस्टम जो है गाइड. ना वो इतना एफिशिएंट नहीं जी. है. जी. ओके, आई थिंक यहाँ पे हम रैप अप करेंगे. काफी ज्यादा आपने टाइम दिया और बहुत शुक्रिया इसके लिए. आपने बड़ी तफसील के साथ और हर चीज को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है. उम्मीद है कि ये सेशन बहुत से लोगों के लिए नए दरवाजे खोलेगा और लोग इसके ऊपर मजीद सोचेंगे. मुनव्वर ने एक कमेंट किया था कि कोई रिसोर्सेज या रिसर्च पेपर्स वगैरह शेयर करें, तो मेरा ख्याल है कि आप इंडिविजुअली जावेद साहब से भी रब्ता कर सकते हैं. और कुछ रिसोर्सेज जिनका इन्होंने जिक्र किया है, मैं कोशिश करूंगा कि उनको ढूंढ के इंटरनेट से, तो यूट्यूब पे जहाँ पे ये वीडियो अपलोड होगी उसके नीचे भी कुछ रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. सर और pleasure तमाम pleasure पार्टिसिपेंट्स को. pleasure speaking with you, interacting with you. जी बहुत खुशी होती है बच्चों से बात करके, स्पेशली फिजिक्स. यानी फिजिक्स इतना खूबसूरत है, यकीन करें. यानी काश मैं आई समटाइम्स फील काश के मुझे किसी ने बताया होता व्हेन आई वाज डूइंग एफएससी एंड फिजिक्स इतना खूबसूरत है. तो फिजिक्स पढ़ लेते हैं. पर ये है कि अब वो किस्मत में मैथमेटिक्स था, बट आई एम स्टिल नॉट गिविंग अप.
आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा सीख रहे हैं, और सीखते रहना, जो आपको शौक हो जरूर सीखते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट इज माय लास्ट कमेंट एक्चुअली। जी जी बिल्कुल, और बल्कि पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हम इस तरह के सेशंस करते रहते हैं। आ, और जैसे कि मैंने वो यूट्यूब का लिंक दिया है, वहाँ पे वीडियो डाल देते हैं। वहाँ पे हमारे पिछले भी तकरीबन सेशंस हैं, और हमारी हमेशा कोशिश यही रही है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज से बचा जाए, और स्टूडेंट्स को नए नए जो फील्ड्स हैं रिसर्च के, उनसे मुतारफ किया जाए। इंटरडिसिप्लिनरी जो फील्ड्स हैं उनसे मुतारफ किया जाए, और एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि हमें एक्सपर्ट ओपिनियन मिले। सो आप उसको भी देखते रहिए। एंड थैंक यू ऑल अगेन। सो आई विल नाउ क्लोज द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।